archon. तुम मैंने प्यार तुझसे है किया. God. Inactivity serves no purpose whatsoever. Why do new explorers make the same mistakes over and over again? अगर कोई आ चुका स्ट्रीम पर बस 2 मिनट है, मैं जरा लिंक शेयर करूंगी. आज मैंने इंट्रो वगैरह कुछ नहीं लगाया ना, इसलिए मैंने इंट्रो वगैरह यूज़ नहीं करे, डायरेक्ट स्ट्रीम स्टार्ट किए. तो प्लीज़ New explorers make थोड़ा सा टाइम दीजिए mistakes over and over again. ताकि जहाँ जहाँ मुझे लिंक डालनी है वहाँ मैं लिंक पे अपलोड कर सकूँ. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. ठीक है, हो चुका है डन. एंड फर्स्ट, अरे भैया वेलकम टू द स्ट्रीम. साई वाह, फ़ोन तो तुम किए नहीं आज, तो स्टार्ट कर दिया आपने. मेरा बिजी इजी होगा भाई कभी. यार इधर कहीं ना एक वर्ल्ड क्वेस्ट दिख रहा है, ये इसको उठा लेते हैं. पीपल भैया वेलकम टू द स्ट्रीम. साई हो जी वेलकम, आओ आओ. Inactivity फिक्स serves हो no जाएगा विपुल भैया, purpose 2 मिनट में whatsoever. फिक्स हो जाएगा वो. Rebooting. Why do new explorers make the same mistakes over and over again?
अनुपम তোর মোবাইল ফ্রি দিছে নাকি তোর মোবাইল ফ্রি আছে All the world holds dear is but a backdrop of তোর ফোন constant ফ্রি love. দিছে তো একটু দে না আমার হটস্পট वगैरह একটু জলদি সে Alone and আমার স্ট্রিম unchanging. বন্ধই হয়ে যাবে নিলে Rebooting. बहुत ज्यादा ही बफर चल रहा है होप कि अभी ठीक है शायद Illusion shattered. Ha! Ha! बफरिंग तो ठीक हो गई है बट स्ट्रीम बहुत डिले चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे Make the same mistakes over and over again. हाँ अभी ठीक दिख रहा है ना अब नहीं हो रहा है ना बफर ठीक है हाँ तो भाई लोग देखते भी आज क्या है अपने पास करने के लिए रेजिन इंटैक्ट है 2 रेजिन में अभी काम बन जाएगा सारा का मटेरियल डोमेन इनके साथ अवेलेबल है क्या थर्सडे लिखा तो है और आज थर्सडे है ना ट्यूसडे है आज नहीं नहीं चैट पढ़ो ऊपर वाली पढ़ो सी फ्रेम डैम बफर पढ़ा ना फर्स्ट आया आप ये भी देखा मैं और इसके अलावा कोई दूसरी चैट करी क्या ऑल चैट पे सेट है मेरा तो थर्सडे अच्छा वही तो थर्सडे ना आजा वही वही कौन सा नशे में है? अरे नहीं नहीं हैं अभी हो गया सेट वहाँ थोड़ी देर बाद अगर तू ऊपर ही है ना मैं बताता हूँ देखो अगर जरूरत पड़ती तो ना तो ऑफ हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो तो कोई कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये बाद में समझेंगे इसका सीन कोई नशे में नहीं हूँ कोई नशे में नहीं हूँ वो माइंड से निकल गया था बस मेरे और कुछ नहीं बफर अरे बफर तो हो गया सही फिक्स हो गया ना बिल्कुल बफर अब नहीं हो रही ना स्ट्रीम में भी देख रहा हूँ ना अभी तो बफर नहीं हो रहा है अभी कहाँ हो रहा है बफर I can do it. तेरा फोन में ट्यूसडे क्यों दिखा रहा है अरे वो आप नहीं समझोगे वो एप्लीकेशन के चक्कर में जिससे स्क्रीन मिरर कर रहा ना वो जब मैं कनेक्ट करता हूँ ना ये स्क्रीन मिरर को तो हमेशा टाइम भी जो है ना वो 9:41 दिखाता देखो और डेट 9 जनवरी सेट है इसमें अरे डे में ही हाँ वही तो Shine down. Let it be known that divinity is mine. आइए आइए आकर में आइए आप भी आइए Let's light it up. Perish! Adventure time. Feeble human! Animal test 6308. My body! It's... Absorption test. I'm going in. No turning back. Flash. Torn to oblivion. You cannot defy me,
टाइम आ गया मरने का लगता है। Adventures, everybody stand back! Can't put handstand on him. Storm the front! Strike! Again! Now you shall perish! क्रिट नहीं कर रही क्या राइडन मेरी? Insignificant pest! एक्टिव नहीं हुआ क्या? वही बोलो, एक्टिव नहीं हुआ क्या अभी तक? More power! No turning back! Illusion shattered! Inazuma shines eternal! क्रिट नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है मेरे को आज। एक भी हिट क्रिट नहीं करा क्या इसने? You cannot defy me, mortal! ओके, फिर से खराब हो जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं आऊँ। अरे बिल्कुल भी मैं वो करने वाला हूँ, बट अभी मतलब से टाइम पास में घुस गए अपन। कल 286 मारा था मैंने नहीदा वाली टीम से। राइडन, नहीदा, बेनेट इनको जो सारा वाला टीम से। आज देख रहा हूँ कितना मार सकते करके। मेरे को बोला था कि सुप्रोज भी यूज करके ट्राई करना है। ठीक है, करते हैं ट्राई सुप्रोज भी अभी। Kneel! Let's light it up! आप आओगे तो अलग ही डैमेज होगा, मुझे मालूम है विपुल भैया, बट वही सीन है कि मुझे अपनी टीम से करके ट्राई करना एक बार। समझ रहे हो ना? Adventure time! बच गया साला। Off we go! Reality is pain! Off we go! Everybody stand back! ओके, Good riddance, cruel world! Stand clear! Let's light it up! Not possible. Swirl, Mark 2, absorption. इलेक्ट्रो करो, हो गया। Teamwork is dreamwork. Glory to the Shogun. Strike. Shine down. Now you shall perish. 308 के। I can't lose it all again. नाइस, 308 के मारी है। सही है। इसकी इतनी क्यों लेते हो आर्कन भैया? क्या क्या कह रहे हैं यार? यही एक आइटम है जिसको मतलब सब रोटेशन कंप्लीट तरीके से मालूम है कि हाँ इजीली कैसे बीट कर सकते हैं इसको। इसलिए क्या किया इस बेचारे ने। वाह, सो मच डैमेज। हाँ, फर्स्ट राउंड में पता नहीं क्यों क्रिएट नहीं कर रही थी, बट सेकंड एक्सेप्शन में बहुत बढ़िया क्रिएट वगैरह भी करी और मस्त काम भी कर गई। ओह, फ्रेजाइल। और ये इसलिए टाइम पास लगा कि यहाँ पे मेरे को 2 ये चाहिए था। अभी कितना टाइम बाकी है? 5 मिनट बाकी है। अभी एक और आने में बोल रही है। ठीक है, सो मेरे को देखने दो कि मेरे को बिल्ड क्या करना है नेक्स्ट करेक्टर। ऑब्वियसली सारा का तो आज अवेलेबल है नहीं, जो सारा का सारा डाल देते सारा में। एंड बुक्स भी नहीं है मेरे पास ज़्यादा सारा के लिए। अब सब खत्म कर दी मैंने बुक्स भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वही कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, अपना ले लाइन्स कर लेते बुक्स के लिए, बेटर रहेगा। देन आर्कन क्वेस्ट में स्विच करता हूँ, जो सेकंड आईडी मेरी उसमें डेलीज करूँगा सिर्फ कमीशन, एंड देन आर्कन क्वेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। और आर्कन क्वेस्ट का पार्ट काट काट के मैं एक स्पेशल वो वीडियो बना के डाल दूंगा। तो मेरे को चाहिए कि 10 मिनट का एक वीडियो बने आर्कन क्वेस्ट का भी, छोटा सा।
मेरे को समझ में वॉल्यूम थोड़ा कम है गेम का। Illusion shattered. ओके अब सही है। अब किधर है? ब्लू वाला स्मोक है ना, बुक्स देता है। ये। अरे नहीं, ऊपर कौन चढ़ेगा? छी, इससे बेटर तो कहीं और ढूंढूं मैं। ये वाला ज़्यादा बेटर है। डैमेज तो है आर्कन में, मानना तो पड़ेगा आपको भी, डैमेज तो है। 308 के मार रही है। कल रात को आप थे नहीं, कल रात को पता है शर्त चल रही थी कितना डैमेज मारेगी, अगर जो एकदम करेक्ट डैमेज बचाएगा ना उसको वेलकिन किया हुआ था। डैमेज तो है, वही तो। क्रिट नहीं मारी वो पहले, वही तो, क्रिट नहीं कर रही थी वो। या फिर मैं रोटेशन लग रहा था, Wind rises. बफ नहीं मिल रहा होगा शायद, जैसा भी हो सकता है। कुछ नहीं करना, अपने को बस यहाँ जाके इसको छोड़ देना है। Swan Fury. ओ भाई, स्लाइड करके घर जाएगा How क्या? amusing. बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। Quit following me. ओके ओके ओके, बुक्स मिल गई है इस डर से तो। The wind rises. Nice and spicy. Let's light it up. Behold. That's far enough. Busted. Here comes the catch. नहीं, मैंने बिना मतलब मार दिया कुछ लग रहा है अब। ठीक है, सारा के टैलेंट भी बढ़ाने अपने को, एंड वो भी, क्या बोलते हैं अपना, ठीक ठीक क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। लेवल 90 भी करना है उसको बस, फटाफट फटाफट। Follow me. तो वो हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। Gotcha. Game's up. Time's over. Behold. How amusing. क्या होगा यहाँ के? अच्छा, वहाँ कोने में आए, मैं बोली यहाँ के खत्म हो गए क्या सब? मॉन्स्टर मोड नहीं आएंगे क्या? चलो चलो। The wind rises. Quietly now. एनर्जी ले लेते हैं इनसे। Let's light it up. Everybody stand back. Behold. Busted. Quit following me. अब किधर आया भाई? यहाँ ही खत्म हो गए, ठीक है। एंड अब कुछ बचा क्या करने लायक, देख लेते हैं फटाफट फटाफट। यहाँ के नहीं करना मुझे, बेटर
मैं सुमेरु जाऊँ, सुमेरु का लेलैंग किधर है साला? ये इधर होगा, ये रहा। ये बस फटाफट निपट जाए तो आर्कन क्वेस्ट चालू करे अपन। Quiet now. Things are about to get dicey. लैग स्टार्ट हो गया। अबे और कहाँ है एनिमी? Happy to oblige. Becomes the hunted. क्या ही लैग हो रहा है यहाँ पे? तो बस फ्रेम ड्रॉप हो रही है। फ्रेम ड्रॉप के नाम में फॉन्ट है नंबर 1 पे मेरे लिए तो। नेक्स्ट लेवल का फ्रेम ड्रॉप है उसमें। Behold! 300 के पिंग पे खेलो भाई, यही तो जिंदगी है। Here comes the catch. कितना फ्रेम ड्रॉप हो रहा है भाई? ये ओबीएस की दिक्कत नहीं है, ये गेम ही में फ्रेम ड्रॉप इतना दे रहा है। Gotcha. अलग ही लेयर का फ्रेम ड्रॉप है भाई। The wind rises. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये है किधर? बुलबुला ये वाला। अरे दिख भी नहीं रहा। अच्छा ये रहा। डिफीट ऑल ओपोनेंट्स तो बोल दिया, ओपोनेंट नहीं दिख रहा अब मेरे को। Adventure. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Game's up. Fun's over. Squalls you. Now you're testing my patience. We'll meet again. Quietly now. एक इंसान कैसे खेल सकता है इतना लैग में? ये भी सोचने की बात है भाई। इतना लैग सहा नहीं जाता। आज दोपहर में स्ट्रीम कर रहा हूँ, शायद इसलिए ज़्यादा हीट हो रहा है फ़ोन, इसलिए ज़्यादा लैग कर रहा होगा। डोंट नो। मैंने सारा बस सीसी मेरा सारा लेवल 90 हो जाए और फिलहाल के लिए तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। आई होप हो जाएगी अब तो। सॉरी, फैन ऑन कर लेता हूँ भाई, गर्मी तो है। This blinding sunlight is such a pain. No way I can. चलो
ओपन करते दूसरी आईडी को चालू करते स्टार्ट सब। शुरुआत से शुरू करते हैं, शुरुआत से नहीं शुरुआत से। अच्छा वैसे आर्किन में अगर आप स्ट्रीम पर हो तो मेरे को बताओ, कल क्यों नहीं कर रहे आप स्ट्रीम? कहीं जा आ रहे हो क्या? कहीं जा रहे हो क्या आप जो कल स्ट्रीम नहीं करोगे स्पेशल प्रोग्राम के टाइम पे? मेरे तो क्लासेस है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आपका क्या सीन है? तेरहवीं है ना किस? अच्छा कल, ओके ओके ओके, हाँ आप बोले थे, याद आया मुझे। देखना फिर भी अगर हो सके, अगर मतलब जल्दी हो, खाने पीने वहाँ पे खाने का प्रोग्राम होगा ना, ऑब्वियसली वो तो समझ सकता हूँ। अगर जल्दी फ्री हो जाओ तो आ जाना, मैं तो बोलता हूँ। मैं ये करूँगा नाइट में, मेरा जो रिएक्शन वीडियो टाइप का आएगा वो रात में आएगा, मतलब मेरा जो रहेगा लाइव तो नहीं रहेगा। Quit following me. Squall Fury. Quit following. चिकन लेग पीस। Off we go. जिसे लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, फटाफट फटाफट से। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बस ये निपटा रहा हूँ मैं। Adventure time. Dare to mess with me? That's far enough. बट डरा रहा है, फट जाता है, इतना क्या डरा रहा है? पास ही पास आते जा रहा है भाई, धीरे धीरे। Squall Fury. एक की चबाने पकड़ लेते हैं। अरे अदिति जी भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। आइए, आप भी आइए, सब आइए। The wind rises.
How amusing. वॉर्नर की हेल्थ 10 पे भाई Too slow. इतू सा रह गया वॉन्डरर बस इतू सा हेल्थ से रह गया 10 एचपी वॉन्डरर Add as. Thank you for. Add as. Quit following me. फारूजान थोड़ा मटेरियल तो इसको लगने वाला है फ्यूचर में लेवल 90 के लिए ठीक है फिर यहाँ टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट वहीं चलता हूँ और सुमेरु में ही तो हूँ मैं क्या कर रहा हूँ हेलो अयो बोलते ना अयो ये क्या हुआ ठीक है चलो ठीक है May knowledge. Gears of the storm. Rain cutter. Everybody stand back. Let's light. Behold. Ooh, nice. जॉर्ड फ्लावर मिला यार फेदर सॉरी मैं तो भारत को बुली करके आते फटाफट फटाफट देन वापस इसको मार के एंड करते हैं अभी का Time to act. Squall Fury. यहाँ पे नहीं आएंगे ठीक है ये कितनी देर में जिंदा होगा 2 मिनट बाद 2 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए अब यहाँ से निकल चुके प्रीमो यहाँ से भी सब निकल चुका है रेस्टोरेंट से भी सब निकाल ही चुके हैं ये तो चाहिए नहीं वैसे मुझे एंड वाटर बॉटल्स ये सब हो चुका है The wind rises. Have a little taste. We'll see about that. ये
slow. अभी क्या सीन बन रहा है, कितना देर बाकी है साले को? यार मेरे को आर्कन क्वेस्ट करना है, ये फटाफट हो जाए। कितना देर, 1 मिनट और बोल रहा है ना। मैं कहूँगा ना गेम रिस्टार्ट कर लेता हूँ तो थोड़ा सा ना लैग कम हो जाएगा। और जो जो आते रहे भाई लाइक करते जाना, ठीक है ना? ओके भाई लोग, गेम रिस्टार्ट करते हैं, इसको मारते हैं, देन आर्कन क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्वप्निल भैया हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। आइए आइए। कहाँ पर हो अभी स्वप्निल भैया, घर पे हो या फिर अपने वहाँ पे बिजनेस जहाँ पे आपका वहाँ पे हो, ऑफिस वगैरह में? अभी आप कहाँ पर हो? मैं पॉम पॉम की स्ट्रीम पे लाइक नहीं किया क्या? 4 लाइक थे आपके आने से पहले भी हैं। The wind rises. Truth repeats its course. Ring cutter. Huh? Huh. I'm going in. You dare to gaze upon me? Quit following me. कर दिया, ठीक है भाई, मान लेते भैया आपकी बात। चलो, पीसेस तो ये भी बड़े जॉर्ड जॉर्ड टाइप के दे रहा है आज। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लियो में चलना अपने को। एंड स्टार्ट अंडरग्राउंड चेस। चलो, जो जो ओल्ड ओजी प्लेयर है उनके लिए तो बहुत सही है क्वेस्ट, देखने में उनको बड़ा मज़ा आएगा। लाइक मी, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा ये आर्कन क्वेस्ट वापस करने में। Too slow. Behold. Make sure to keep up. सो गाइस, जो जो अभी तक देख रहा है, एफ जी जी, सपनिल भैया, आर्कन भैया, सिट बैक एंड एंजॉय, ओल्ड मेमोरीज आर हियर। आई होप आप लोग समझ ही गए ये आर्कन क्वेस्ट है या वर्ल्ड क्वेस्ट। आर्कन क्वेस्ट, आर्कन भैया, आर्कन भैया बोल रहा हूँ, स्वप्निल भैया, ये वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं है, आर्कन क्वेस्ट ही है। Lucy, is that you? Hey, did anyone else just hear that voice? It sounded super creepy. Quit following me. अबे पहले ही आंख दर्द हो रही है एंड ये क्वेस्ट क्या हो गया सबसे ज्यादा आंख को आपकी?
ऑपरेट करना रहता है ना इनको कुछ। बिग बग फैन। अरे वेलकम नॉट मोड, वेलकम टू स्ट्रीम। आओ सब आओ सब आओ। ये मेरे ये वाले आर्कन क्वेस्ट में पता है एक्चुअली बचा के रखी थी कि बाद में कभी करूंगा, और आज टाइम आ गया करने का भाई लोग। कुछ नहीं, थोड़ा इजी पेन हो रहा है। अच्छा, थोड़ा इजी पेन हो रहा है कुछ दिन से। एंड Get me. Top fight. Is some sort of battle taking place here? I wonder who could be involved. ओके, तो कुछ नहीं, थोड़ा इजी पेन हो रहा है कुछ दिन से। एंड उससे जैसा नॉर्मली ठंडे वंडे पानी से साफ किया करो आर्कन में। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो क्लॉक घुमाने वाला एनोइंग है। क्लॉक वाला भी आने वाला है अभी। क्लॉक वाला भी कहाँ आया है? क्लॉक वाला भी अभी आने वाला है इसके Small बाद ही। theory. इस साल में कौन सा सेंट्रल है क्या? नहीं, ये डैमेज दे रहा है सेंट्रल, बेनेट से डैमेज करते हैं। ओके, सो ये लोगो याद रख लेता हूँ इस टाइप का, ठीक है। ये रहा याक्षास, ये वाला है। और इस कोने में ये वाला है। आ जाओ रे। Let's light it up! Judgment! Behold. इजी, थोड़ा चक्कर जैसा। हाँ, थोड़ा वही बोल रहा हूँ, ठंडे ठंडे पानी से आँख वाँख धोया करो। बाकी चक्कर का तो कुछ कर नहीं सकते मैं, आप मतलब चक्कर आ रहे तो उसका क्या कर सकते हैं। नॉट, मेरे को ये आर्कन का वन ऑफ द बेस्ट में से एक लगता है, और जिसमें मतलब बहुत बहुत से कैरेक्टर्स का सीन है। सिंगल आर्कन को इसके हिसाब से मतलब वो वॉन्डर वाला स्टोरी वाला आर्कन को ज़्यादा बेटर लगा। उससे वॉन्डर की स्टोरी में कंप्लीट निपटाया ना उन्होंने। मस्त है। हाँ वही तो, ये वाली आर्कन को बहुत मस्त है यार। एक हो गया, दो हो गया, अब किसको चलना है? अब इस वाले पे नहीं, अब पर्पल वाले पे चलते हैं। No. It's still alive. Why would you become like this? I won't attack you. That sounds like Shell. Could he be in trouble? हाँ, बहुत Sounds ट्रबल like में है। someone forgot to invite us to the fight. Let's go and help him. Yeah, but how are we gonna find him? तो ये वाला ही है, ठीक है। ऐसा कुछ सही नहीं ना। ये वाला है। और एक और किधर है? ये वाला दिखा है यार, और बाकी है। और कहाँ है? ये वाला। अरे नहीं, ये वाला नहीं है। और कहाँ है यार? और तो दिख नहीं रहे मुझे, तीन ही टेम्पलेट्स पे दिख रहे हैं। ग्रीन वाला यहाँ पर है। ब्लू वाले में चल के देखते हैं क्या सीन है। शाओ द लॉली। अभी तो वो लेगा ना, हे लिटिल डूड। Quit following me. इसमें कौन सा होगा? इसमें ये वाला होगा। हाँ, ये वाला ही है। ये सेंटर में। अब कहाँ है इसके? और तो दिख नहीं रहे मुझे। ये एक इस कोने में है, दूसरा ये कोने में है। You're dead.
अब क्या करना है? इसमें भी 2-3, इसमें भी देखो ज़्यादा नहीं है। ऊपर वाला का सीन नहीं पता मुझे। इस पे नहीं है यार। इस साल भी जाके देखता हूँ वो क्या है। वो कंप्लीट क्वेस्ट याद नहीं है ना, दिक्कत हमारी। इस साल कुछ हो रहा है क्या? 2 चालू हुए हैं। पर्पल वाली साइड बाकी है, ब्लू वाली साइड बाकी है। ब्लू वाली से मैं अभी आया हूँ। इसमें तो और दिख भी नहीं रहे मुझे यार, इसके अलावा ब्लू वाली में। इवन पर्पल वाली में और नहीं दिख रहे। ऊपर वाला कुछ तो भी है। इस वाली चल के देखते क्या है ये वाला। इस वाले से तो लाइट्स जा रही है, मतलब ये वाला हो चुका है, ऐसा समझ मान लेता हूँ मैं। इस वाले से लाइट जा रही है तो ये वाला हो चुका होगा। एंड इस वाले से लाइट जा रही है। मेन प्लेटफॉर्म पे जाके देखता हूँ एक बार। ये तो साइड वाले प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा। इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ नहीं है। देन वहाँ पे तो एक्टिव दिखा रहा है मुझे। एंड ये वाला प्लेटफॉर्म शायद ग्रीन या ब्लू में से कोई सा एक होगा। इस प्लेटफॉर्म पे भी कुछ नहीं है। एंड इस वाले पे है। इस वाले पर्पल वाला है बट यार मैग्नेस में एक्टिव क्यों नहीं हो रहा ये वाला? सबको दौड़ लगा देता हूँ मैं एक बार, क्या बोलते हो? ओके हो गया। Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Gears of the storm! The wind rises. पावरफुल तो बहुत है वंडर अपना। ओके सो 2 वहाँ पे और आ गए नए। ऑपरेट एंड ये इस कोने में आएगा। मैं बोलूँ थोड़ा दिख नहीं रहा इसका। ये डन। डन। पर्पल वाला भी चमक गया। ओके सो लास्ट जो है ब्लू वाला बाकी है, ये वाला। चलो लगाते इस पे भी दौड़, देखते क्या एक्टिव होता है। Why do they never miss? हो गया कुछ ना कुछ। चलो ठीक है। बूम Everybody stand बूम back! Punishment! बूम Let's light बूम। it up! Truth repeats its course! Try louder. और क्या बचा हुआ है? अरे आजा रे, टाइम पास। ओके नाइस। Quit following मेरे बोले तो मार खानी थी। मेरे को रखा के लिए, मार खाने के लिए रखा है। ठीक है डन। चलते आगे। The light seems to be leading to another platform. Let's go and take a look. इस प्लेटफॉर्म से जाना है, उस प्लेटफॉर्म से जाना है? इससे जाना है कि एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा उसी प्लेटफॉर्म से जाना था मतलब है। Squall and Fury. प्लेटफॉर्म पे तो आ गए। The ground has dissolved? What's down there? Is that little dude called Shao down there? We gotta help him. लिटिल Hold डूड। on. Something's not right here. What's this? It appears to be a small fissure.
What can you possibly find inside? It can't be a living person, can it? ये इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ काम आएगा थंबनेल वगैरह बनाने के Conqueror of demons? Xiao, is that you? Oh, and quit trying to scare us, okay? Huh? Wait, is this some kind of illusion? Paimon can't touch him! Conqueror of demons, can you hear us? What happened? Hey, are you okay? Hey! Hello? Little dude! Anyone home? He isn't responding. What's going on here? You. Oh, he finally said something! Oh! We followed your voice and found you here, but it's kind of strange. We can't touch you. How did you become an illusion? An illusion? Talk about a coincidence. We were just thinking you went missing and stuff, and then we heard the sound of you fighting. Pretty lucky we found you, if you ask me. You didn't get hurt, did you? A coincidence. Wait. Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! If he can, we should have him regroup with us as soon as possible. Tell us what happened and where you are now. We'll come find you. No. Your safety is the top priority. It seems this space can... गायब He disappeared. Where'd he go? It sounded like he might be injured. We need to go help him. It seems the only option we have to explore any further is through that entrance over there. Huh. He's injured and telling us to be careful? It's not like we're in any danger here. Anyway, the secret behind whatever's going on should be in this cave, right? Don't worry, little dude. Ito's on the way! Boss, please don't go charging ahead. You're an Oni, not some hunting dog. Don't worry! I'm invincible! Ah! Oh, my butt! पिछवाड़े के बल गिर गया Pretty deep. Be careful, everyone. विंड ग्लाइडर है मेरे पास तो आराम से उतरेंगे अपन अच्छा हम पानी में गिरे और लगता है ईंटों के भी पिछवाड़े के बल गिरा ओम भाई हेलो वेलकम टू स्ट्रीम हमने बोला था ना आज जल्दी स्टार्ट करेंगे आप लेट आए हो भाई ओके ईंटो यहाँ पे खड़ा है आओ ओम भाई आओ वेलकम टू स्ट्रीम मैंने वही सोचा कि एक स्टोरी निपटा लेता हूँ आज Well, Bullchucker, how's your ear? It's fine! Ugh. My butt is tough! Go ahead. You can cry if it hurts. I promise I'll try not to laugh. What do you mean try not to laugh? You should be feeling some serious sympathy for me right now. But wouldn't feeling sorry for you be a violation of your dignity? Besides, it's harder not to laugh when I'm not the one in pain. पिछवाड़ा टच करो दर्द दर्द से किलस रहा ईंटो Paimon, don't laugh. It's okay, everybody. If you want to laugh at him, just let it out. Don't you have a heart, Shinobu? Oh, and people think I'm the monster. Wait a second. Xiao's not here, but... Is that at all? Seems a little out of place here, don't you think? Maybe it's some sort of, I don't know, an emergency shelter? There was a picture book I read once that said nice people sometimes build cabins in dangerous places so that anyone in trouble can take shelter inside. बात Our तो little सही है dude must be inside then. Yeah. I wouldn't be too sure about that. Any person with a normal sense of danger wouldn't be so optimistic. Wow, Bullchucker. Looks like your subordinate is telling you what's what. Oh, I believe she was talking to both of us. Yeah, so you can wipe that smug smile off your face. All right, watch and learn, Shinobu. This is why I'm the boss and you're the deputy. If no one is macho enough to open the door, then allow me. Step aside. मुझे नोटी नहीं आया और मैं अभी तक गेम ही खेल रहा था हाँ सही कोई दिक्कत नहीं Once this door's open, we are out of here. घूसा हमारा कुछ भी नहीं हुआ
वहाँ बाजू में मैग्नीस में उसको छोड़ के घुसा मारा दीवार में. बीन्स रखे हुए. Eviloni, be gone. You heard me. Get out of here. फिर फटी इसकी. Am I seeing things? Or was there someone behind the door? दरवाजा फिर बंद हो गया. Ah, can't be. You're just saying things. Why don't we just open the door again and see? Who? Me? Oh, all right. I'll open it again. फिर खोला दरवाजा. सब ताली All you बजाए kids भाई move उसके around लिए. all day. You're a bad influence to our child. Be gone. फिर फटी. Those people are carrying bowls. Bowls full of beans. What's that all about? People throw beans to drive out Oni. Boss is an Oni, so they throw beans at him to get rid of him. Gave me the fright of my life. What are people from Inazuma doing in a place like this anyway? Calm down now. You're a person from Inazuma too, you know. Hey, let's get one thing straight, all right? I'm not a person. I'm an Oni. Right, but that's not the point. The question is, does this door lead to Inazuma? Huh? How could that be possible? Ugh, this place is so weird. Paimon's starting to think it really is haunted. Open the door and sees anything changes. You guys go right ahead. I'm not opening it again. So, who's up? Oh, how about Paimon? Why don't you open it? No way! Somebody else do it. Paimon's scared. All right, I'll try. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? All right, let's see what's behind the door this time. सबके टाइम अलग अलग दिखाएगा. हैं? उसकी माँ है ना. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... शिनोई बाहर आ गई. Shinobu? Who is that? No way. Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? यार इतने दूर दूर क्वेस्ट है कि पूरा घूम के जाना पड़ता है. बहुत टाइम लगता है उसमें. पूरा फार्म करते हुए जाना पड़ता है. करो करो भाई, ये तो गेम The है. whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. बात तो That's सही है. right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. मैं यही हूँ नोट्स लिखते लिखते स्ट्रीम देख रहा. यार भाई देखो चार्ज कितना खाता है. चार्जिंग पे लगा के खेलना पड़ता है. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. मेरे को देखना था एक्चुअली Why? येलान का. येलान किससे डरती है करके, अगर हो सकता तो. Because I don't buy it. That's why. I don't believe for one second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. So I'm sure as heck not gonna be the one to get us through. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination.
4.1 का अपडेट बताने वाले हो क्या 4:30 पे? अरे आज नहीं है भाई, कल है लाइव स्ट्रीम। आज होती तो क्या बात होती, कल है लाइव स्ट्रीम भाई। All right, I'll try. Yeah, my savior. Show 'em what you're made of. Do you have any phobia, Yenfei? I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer. Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers मैं कल something for free? नाइट में बताऊंगा भाई, कल नाइट वाली स्ट्रीम पे मैं शायद बताऊंगा। You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. A civil dispute. Didn't see that coming. Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. इसमें तो कैरेक्टर जाएंगे अंदर, शायद अंदर। हाँ वही कुछ सही, It's मैं my भूल गया हूँ। desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Elon. We're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. Okay. I serve Ningguang, the Tianquan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. Okay. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Oh ho 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 ho. Is that a sufficient reason for you? Oh, yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? Who's Ningguang? She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. ये आपकी मेन आईडी में खेल रहे हो क्या? नहीं, सेकंड आईडी में खेल रहा हूँ ओम भाई। Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to know. Yeah. It's called being a free Oni. Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. What about you, Traveler? Would you like to try? Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. Find who are you looking for? Maybe I'm always looking for someone. So, wait. What's Paimon looking at? Oh bhai. Is this the Wiz? It is what I fated. सब disappear हो गया। Terra smash! Escape from here. भाई वापस ही भेज दिया। ओ हाँ वही ओम भाई, टेंशन ना लो, सेकंड आईडी वही। There you are! You sure had Paimon scared. We couldn't open
find anything, traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? No. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? Yes, I did. Behind the door, I saw the darkness of the abyss that took my twin away. Huh? Okay. How could that be? विंड का भी रॉक का हो गया. चलाओ रॉक वाला चलाओ. Don't worry. लियो में बहुत जगह ऐसी जहाँ पे तुमको रॉक वाली एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी. Stupid door! I'll smash you to pieces! If Paima wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. वाह भाई वाह. Hey, what is this? Nap time? Sorry. So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. ये स्क्रीनशॉट भी सही है. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a... On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. Sure, that makes sense. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. बताता हूँ भाई देखता हूँ मैं. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. देखो ऐसा है ओम भाई अगर तुमको वापस से वो विंड यानी एनिमो वाला ट्रैवलर करना है ना, कुछ भी मत करो, ट्रैवलर सेलेक्ट करो, मॉन्स्टैट के किसी स्टैचू ऑफ सेवन में जाओ, वहाँ पे रेसोनेट विद एनिमो लिखा आएगा, उस पर क्लिक करो, तुम्हारा ट्रैवलर वापस एनिमो का बन जाएगा. जियो यानी कि वो रॉक वाला चाहिए तो लियो में किसी को कर लेना, ऐसा सीन रहता है. ठीक है ना. सो कोई बड़ी बात नहीं है. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. But now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. Okay. Right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? ठीक है, अच्छा हो गया, समझ गया. थैंक्स. वही तो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है. इजीली कुछ अगर विंड वाला करना है तो मॉन्स्टरेट के स्टैचू सर में जाके रेसोनेट विद एनिमो कर लो उसको. बट एनिमो ट्रैवलर से ही करना पड़ेगा, ये याद रखना. ठीक है ना. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Oh, Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How can you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you more once my ideas have taken shape. Sure, sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. You think so? As they say,
2 heads are always better than 1. ठीक है चैट पढ़ते हैं. ओके सो कि मैंने वैसे फिगर आउट किया था बट अब कंफर्म हो गया. हाँ बस वही तो. नॉट वॉट योर पुम्बू भाई. शोगन आने तक 180 प्लस पुल्स होंगे. हो जाएगा क्या. जॉन निकालने की सोच रहा हूँ. 50-50 है. वो भी अगर जीता तो 180 पुल्स चाहिए. अगर हारा तो गारंटीड में सही है. फिर देखो नॉट मोड. अगर तुमने सब कुछ कर लिया है ऑलरेडी 4.0 में तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 4.1 में तुमको एज ए F2P 100 पुल्स मिलने वाले हैं. अगर तुम 36 स्टार करते हो तो ठीक है करते ही होगे तुम तो. सो 36 स्टार अगर अभी करते हो तो कंप्लीटली तुमको 100 पुल्स मिलने वाले हैं एज ए F2P. ठीक है. एंड 4.2 का कुछ अभी आइडिया है नहीं बट 100 पुल्स तो मिल ही रहे हैं. और एक्सप्लोशन वगैरह का तो काउंट वगैरह करोगे तो तुमको मतलब कंफर्म मिल जाएगा. सो अगर तुमको जोंगली चाहिए तो जोंगली निकालो. ठीक है नॉट मोड. मैं तो बोलता हूँ निकालो अगर तुमको चाहिए तो. जीत गया तो अच्छी बात है. अगर लूज भी हो गया तो भी तो, मतलब तुम्हारा राइडन कंफर्म हो जाएगी. सो मैं तो There's no बोलूँगा अगर such तुमको thing करना as चाहते हो तो pure कर लो. freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. It's hard to believe what we've encountered. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? After these last few years, though the list of annoying strolling around, just don't laugh at me. पायामोल के सर के ऊपर देखो. इसका एक फोटो खींच लेता हूँ पायामोल का. स्टिंगलिस वो मिल गया मुझको. Sure you can't find a way back to that door again? प्रति ने पुल किया तो मिल गया. अरे तो वो स्टिंगलिस वो अच्छा है वैसे तो. देखते हुए कर देता हूँ फिर. हुट और टीम हो जाएगी बिकॉज C0 C1 की सोच के रखा था बट पोलर स्टार निकल निकल लिया. एंड सुना शोगन आ रहा है तो सेविंग शुरू. हाँ कर लो. Ah, perfect timing. I was just having a chat with Ushi about that. You know what? I can handle those mean people behind the door throwing beans at me, but causing trouble for you? Nuh-uh. That ain't gonna... What? There's nothing we can do? Listen here, Beefcake. You shouldn't give up so easily. Can't you have one Beefcake. last look for it? If you really can't find it, we'll just have to find another door. With any luck, one that connects to the outside. कॉन्स्टलेशन की बात चल रही है ओम By भाई. the way, traveler, if you have इसकी बात हो रही है. सी जैसे मेरा वॉन्डर C1 है तो C2 C3 अगर ये चालू नहीं होता ना तो C1 नहीं होता C0 होता. please come meet me over there. ये C1 Thanks for C0 keeping ऐसा this होता for है. me, traveler. I've been thinking about this place. Since we still don't know just what kind of danger we're up against, we can't afford to delay any longer. We have to find the Conqueror of Demons as soon as possible. Don't you think it's a strange coincidence that as soon as you told us about the Conqueror of Demons, we heard his voice in that place? It almost seems deliberate. As if something was trying to convince us that the Conqueror of Demons was there in order to lure us into the unknown. I have a theory, but I can't tell the others just yet. I don't want anyone to panic. Judging from the Conqueror of Demons' reactions, I think that he was somewhere else, but his voice and image were projected to our location. Is it possible that we've entered into a chaotic space? We're seeing things in people that shouldn't be here, even ghosts. And we don't feel hungry because the state of our bodies is suspended. It's as if time itself has stopped for us. If that's true,
It means we've entered into a place where normal logic doesn't apply. When you put it all together, everything points towards one possibility. This is a place where time and space are thrown into chaos. Okay. And yet, if it's truly chaotic, how did we find our friend's voice even when we had no idea where he was? It doesn't make any sense. Unless this space wanted us to hear it. Which brings me to my next point. I also have a theory about our encounter with the Conqueror of Demons earlier. I submit that we didn't actually see the Conqueror of Demons. He was somewhere else. But his status was transmitted to us through some kind of mind-bending spatial alteration. Traveler, you said you saw the abyss in that room, didn't you? गुगू गागा आओ अल्ट्रा भाई आओ लाइक करो मैं गेम खेलने जाऊं क्या मेरी क्वेस्ट बाकी है आधे में छोड़ के आया हूं जिसे पता चला आप लाइव हो गेम छोड़ के पहले बात करने आ गया अरे थैंक यू भाई ओम भाई आपकी मर्जी करने जाओ नहीं जाओ वो आपका पर्सनल चॉइस है बट अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो कि ये क्वेस्ट बड़ी खतरनाक है इसलिए At first glance, the door may seem भाई like a prank. It shows you whatever you're afraid of, but if it manages to lure you inside, there's no way of knowing what might be in there. 1 minute, it's playing a joke to get you to lower your guard. The next, the danger is real, and it's trapped you. This space is a powerful opponent. It wants to use our minds against us. But I'm not gonna sit here and do nothing. Do you remember that small spatial rift next to the dissolving ground? It felt like spatial magic, but it seemed much more powerful than usual. When we saw that illusion of the Conqueror of Demons, it seemed like he wasn't expecting our spaces to intersect at all, मैंने and आपके was लिए even more C6 पे surprised that निकल we लिया could वाह hear भाई and see him. I think that this space purposefully transmitted the Conqueror of Demons' voice to lure us into a trap. But I also think it didn't count on that spatial rift happening. In other words, the fact that we saw and spoke with the Conqueror of Demons was never part of its plan. Yes. Also, I had a good look around after coming back. I have a feeling that these chaotic spaces are constantly intersecting with each other, meaning that anything is possible. I think this gives us an opportunity. If the space creates phenomena meant to deceive us based on our imaginations, then we have to keep imagining, Traveler. If we try to stay calm and listen carefully, maybe, just maybe, we'll hear the Conqueror of Demons' voice again. Can you feel that? Let me see. I think it's here. जय श्री राम राज भाई वेलकम टू स्ट्रीम आओ आओ एक और C6 बनी वाला कैरेक्टर प्लेयर आ गया अपने पास And break! I secretly learned Yelan's illusion breaking method without her knowing. Really didn't expect that to work. मैं रुक जाता बट मैं अभी 5 बजे तक खेल पाऊंगा उसके बाद मेरे फ्रेंड आते हैं तो फिर बीजीएमआई खेलता है क्वेस्ट खत्म करने के बाद आता हूँ ओके ओके ठीक है जाओ जाओ सो The जा sound came from behind this illusion. Let's go in and take वेलकम a एज look. भाई लाइक कर देना Quit following me. इधर getting इनका इधर clearer. No. This is the chasm. What did British go through here? If it was just that battle 5 years ago, what is he doing here? ये नहीं फिर तो दिखे दौड़ती है Is that the prime action? आजा ये पे आजा चलो चलो हो गया सुजीन हेलो यो वेलकम टू द स्ट्रीम आइए आइए स्वागत है आप सभी का पुरानी के अंदर Conqueror of Demons, can you hear me? It's Yenfei. The Traveler and I are trying to find you. Shao, are you there? Traveler? Yenfei? Yenfei? Yes. It worked. Are you okay?
ये क्वेश्चन करो। हाँ वो सेकंड आईडी में है ना, सेकंड आईडी है, I'm बचा fine. के रखा था करने के लिए। What Listen happened? to me. It's chaotic here. We may not be in the same space, but sometimes the sound can get through, which अभी means शाव these आएगा ना different spaces अंदर से intersect from time सच to करके। time. Everything is chaotic here. Find a way to get to us. No. The darkness that sullies my soul is harmful to mortals. ये पोर्टल कुछ और ही लग रहा है। अरे बट इसमें शाव आएगा ना अभी। Right now, we have more dangerous things to worry about than that. This space is using our urge to find you to lure us into traps. Without you here with us, our search for you could very well lead us into danger. Please come. So, you're in danger too? He said too, मतलब वो खुद भी डेंजर में। कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे? अच्छा अच्छा, हाँ समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। जिस हिसाब से वो खुला हुआ है ना पोर्टल। There was no need for you to search for me. But we're worried जैसे about दो you. उंगली चले जा Mentioned आराम से earlier, अंदर। the traveler was tricked into entering a समझ रहा हूँ dangerous place. कॉन्टेक्स्ट में। दो उंगली डाल सकते हैं अपन पोर्टल के अंदर बहुत आराम से। इट्स ट्रू। ये बहुत क्लियर विजन है उस चीज का सुजीन। समझ रहे हो तो? ये बहुत क्लियर क्लियर है वहाँ का। ये जो बना हुआ है ये मेरे रोक रखा है थोड़ी देर के लिए। How do we meet? यही बोलना चाह रहे हो ना? कि कुछ और बोलना चाह रहे हो? Conqueror of demons, can you find out where our voices are coming from? Find the spot where our voices are अरे ये confused सरीना and तुम try. हो। हाँ Hold it सुशील there. मैं ही हूँ, ये It might सरीना work. ही हूँ मैं। और ये मेरा स्ट्रीमिंग वाला चैनल है। मैं ही हूँ सुशील, वो मैं ही। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर। हाँ नॉट पॉन्ड वही तो। अरे अभी मैं जा रहा हूँ गोवा भाई, अभी पता नहीं क्या होगा मेरा सीन वहाँ पे। I see. सोचो किसी को Space लेके is चलूँ के made to साथ में। sense the chaos. बाइक में बिठा के किसी को लेके चलता हूँ सोच रहा हूँ। इमेज नूब की लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है, नूब जो है मैं इसलिए बोलता हूँ उसको, मतलब ऐसा नहीं है। हम समथिंग 6 महीने में उसके चैनल पे स्ट्रीम वो था, 1 महीना मेंबर भी था मैं उसके चैनल पे। सो जब गिव अवे हो रहा था ना, तब तब मैं उसका मैंने बोल के अनसब्सक्राइब किया कि भाई मैं और नहीं रहूँगा इस चैनल पे, जैसा काम तो कर रहा है उस हिसाब से। क्योंकि उसका सीन क्या था, मैं तो वो चलो ये स्टोरी स्टॉप में फटाफट ब्रीफ बता देता हूँ, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। नहीं तो वो मैंने इसलिए उसको ऐसा बोल किया था कि भाई तेरे से नोबड़ा कार्यक्रम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तेरे को बोल के अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। वो बोला कि ठीक है भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। कि हाँ तुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा, तू क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके तू कर लेता है, देन दूसरों को बोलता है भाई तुम्हारी ऐसी ये बिल्ड है वैसी ये बिल्ड है। चलो वो तो ठीक है, समझ में आता है। एज F2P को तुम बोल रहे हो कि भाई हम तो वेल हम कर लेते, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, भगवान की दुआ से तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो। हम नहीं है F2P के हिसाब से। बट जब तुम गिव अवे करने बैठे, मैं उस गिव अवे में था, जब तुम गिव अवे करने बैठे तो क्या था कि 10 उसके टोटल 21 बंदे उसके गिव अवे में थे, जिसमें से 11 मेंबर्स थे और बाकी सब नॉन मेंबर्स थे। तो व्हील में सबका नाम डाला तो सीन पता क्या था कि अगर मेंबर का नाम आएगा ना तो वो बाहर नहीं होगा, उसको 3 लाइफ मिल रही है ना। और जो नॉन मेंबर है उसको सिर्फ 1 टाइम चांस मिल रहा है, जो मेंबर है उसको 3 बार चांस मिल रहा है। मतलब 3 बार नाम आया तो वो व्हील से आउट होगा। भाई वो व्हील घुमाया जा रहा है और नॉन मेंबर का नाम आ रहा है तो रख ले रहा है, नॉन मेंबर का नाम आ रहा है तो बाहर निकाल दे रहा है। मेंबर का नाम आ रख रहा है, नॉन मेंबर को बाहर। ऐसा करते करते भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, सारे नॉन मेंबर जो ना सब बाहर, इवन मैं भी था उसके अंदर, है ना। तो मैंने खुद ही बोल लिया था कि भाई मेरे को निकाल ले, मेरे को नहीं चाहिए तेरा गिव अवे, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो मेरे को इतना अच्छा गिव अवे भी जीत के मेरे को कोई फायदा नहीं है। और तब मैं मेंबर था, ठीक है सुजीन। मेरे को समथिंग 2 या 3 दिन बाकी थे मेरे मेंबरशिप के, तो मैं मेंबर था उस चैनल पे। तो घुमाया जा रहा है, वो प्लेयर निकले जा रहे हैं, घुमाया जा रहा है निकले जा रहे हैं, मतलब फिर नहीं खेल रहा। फेयर नहीं, हाँ फेयर तो है ही नहीं ना। अगर आपको मेंबर को ही देना है तो मेंबर ओनली कर दो, बात खत्म। कि अगर आपको मेंबर चाहिए कि किसी मेंबर को ही मिलना है तो मेंबर ओनली कर दो। बट वो क्या कर रहा था, व्हील घुमा रहा है, नॉन मेंबर का नाम आ रहा है बाहर, नॉन मेंबर का नाम आ रहा है बाहर, मेंबर का नाम आया भाई चलो इसकी 1 लाइफ कम हो गई है, अब इसके पास 2 लाइफ बची है, नॉन मेंबर का नाम आया बाहर। ऐसा ऐसा चल रहा है। मैंने बोला ये क्या बात होती है भाई, भले मैं मेंबर हूँ, मेरे को एडवांटेज मिल रहा है उस चीज़ का, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तो नॉन मेंबर के साथ ऐसा करेगा। 3 लाइफ देने तो वो तो मेंबर्स ओनली व्हील बन जाएगा मोस्टली, क्योंकि 3 लाइफ तो नॉन मेंबर को हटाने के लिए दिया है। वही तो सच में नूब निकला वही। अरे आप खुद ही सोचो ना, उसकी स्ट्रीम पड़ी होगी, उसकी स्ट्रीम पड़ी होगी, उसके लेके फिर बाद में हमारे डिस्कॉर्ड पे बहुत मुझोरी हुई। मैंने ऐसे बोल दिया कि देख भाई मैं तो फेस कैम नहीं करता हूँ, स्ट्रीमर तो मैं भी हूँ,
मेरे पास तेरे जितना बड़ा सेटअप नहीं, लाख 1.5 लाख रुपए का मेरा सेटअप देखेगा ना, हंस देगा तू, बट फिर भी मेरी स्ट्रीम तेरे से ज़्यादा बेटर होती है और मेरे को गेम का नॉलेज भी तेरे से ज़्यादा बेटर, मुंह को बोल दिया था उस बंदे को ऐसा कि तेरा सेटअप क्या है, पीसी लेके बैठा है, तेरा कैमरा लगा, ये वो जमाने भर की चीज़ें, मेरे को कि मेरा सेटअप देखेगा तू, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है जिसमें गेम नहीं चलता, मोबाइल से केबल के थ्रू, यही है केबल के थ्रू मैं स्क्रीन शेयर करके ओबीएस से स्ट्रीम करता हूँ और उसमें भी मेरी स्ट्रीम 3-4 बार जो है फ्रेम ड्रॉप हो जाती है। सो मैंने वही बातचीत खत्म कर दी कि देख भाई, रही बात मेरे कंटेंट की तो उससे तो बोल मत, मेरा एक फोटो में 6-7 महीने हो गए वही नहीं चला रहा मैं स्ट्रीम पे कि एक जैसा फोटो खींच कर रख दिया और वही फोटो में बस पीछे का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है और फोटो एक ही चल रहा है मेरा, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। नहीं भाई, मेरा तो फेस दिखता नहीं है, बट एक बात है, मैंने थंबनेल सेलेक्ट कर रखे हैं, मैंने डेलीज करने का एक ही थंबनेल रहता है, क्वेस्ट के ऊपर मैं क्वेस्ट का थंबनेल उठाता हूँ, जब इवेंट होता है तो मैं किसी कैरेक्टर का वगैरह का स्पेशली थंबनेल उठा लेता हूँ, स्पाइरल के लिए मैंने स्पेशली थंबनेल बना रखा है कि स्पाइरल में मैं ये थंबनेल यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं कि एक ही थंबनेल, मतलब एक ही फोटो में थंबनेल पे चिपका जा रहा हूँ कि हाँ बैकग्राउंड चेंज होगा पर फोटो एक ही है मेरा, वो काम हमसे नहीं हो पाएगा भाई। अगर मैं फेस कैम भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो वो भी शायद मैं विदाउट फेस डालूंगा इन फ्यूचर, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। मैं भी आपके जैसे ही स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि मेरे पास आईफोन नहीं है। अरे नॉट मोड मेरे पास भी कहा था, पहले तो मैं वन प्लस में कर रहा था ना भाई, ये तो सेकेंड हैंड Then लिया मैंने। try something. चलो Tell अभी me. सुजैन, अभी उसकी बात और नहीं करेंगे ना अपन, Hurry! If we miss इतना this chance, खतरनाक we गिवे might में not कभी even पार्ट live नहीं करना one. मेरे को, जीत भी जाऊंगा तो भी नहीं लूंगा, लेकिन भाई 10 बंदे बोलेंगे क्या साला, क्या पागलपंती वाला चल रहा है। Stand अब back. विश्वास नहीं करो, सब बंदे ये बोल रहे हैं चैट में, उस टाइम ये बोल रहे हैं, मेंबर्स कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको तो मिल रहा है चांसेस, मेंबर थोड़ा ना बोलेंगे, पर जो नॉन मेंबर जो बंदे थे, 9-10 बंदे जो पार्ट कर रहे थे नॉन मेंबर, सब बोल रहे हैं, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अरे भाई ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। नॉट मॉड जो मेरा स्ट्रीम पे मॉडरेट, नॉट मॉड बोल रहा हूँ सॉरी, इलाइट शैड जो मेरे स्ट्रीम पे मॉडरेटर है, मेरे वाईटी चैनल पे, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे मॉडरेटर है, और वो उसके उस पे भी मॉडरेटर है, ठीक है ना, वो उस बंदे के उस पे भी मॉडरेटर है। तो वो खुद ऐसा बोल रहा कि अच्छा हुआ मैं इस दिन स्ट्रीम पर नहीं था भाई, नहीं तो मैं बोल देता मेरे को मॉड से हटा दे। और कुछ दिन पहले इनका कुछ हुआ, मतलब वो कुछ पूछ रहा था तो शैडो ने जवाब दिया, तो शैडो को बोलता मैंने तुझसे पूछा क्या, ऐसा बोलता है। अरे भाई तुझे उससे नहीं पूछा तो ऐसा बोलना, अरे भाई मैं तुझसे नहीं उससे पूछ रहा हूँ, ऐसा बोलना। क्या बोलता है वो कि तू उसका डायलॉग, मैंने तुझसे पूछा कि शैडो तू क्यों जवाब दे रहा है बीच में क्यों बोल रहा है भाई, ऐसा बोल दिया मैं कि भाई कुछ इज्जत है कि नहीं पता नहीं भाई। और वो बंदा मेरे को आगे बोलता है समझ कि भाई तू अभी भी मॉडरेटर उसके चैनल पे, मैं अगर होता तो मैं तो मॉड से हट जाता, और मैं तो सब्सक्राइबर था, वो भी मेंबर वाला सब्सक्राइबर था, मैं तो वो भी हटा दिया था भाई कि हटाओ नहीं चाहिए भाई, अपने को ऐसा बंदे के साथ रहना ही नहीं है अपने को। टट्टी थंबनेल भी चलेगा तो बताओ, मैं बनाता जब टाइम मिले, ताकि थंबनेल अलग रखने मिले स्ट्रीम पर। हाँ थंबनेल देखो, मेरा सीन वही है, मैंने 5-6 टाइप के थंबनेल बना रहे हैं अलग अलग टाइप की स्ट्रीम के लिए, सीधी सी बात है। मैं भी रोज रोज थंबनेल नहीं बना सकता, नॉट मोड तुम यार, जो जो मेरे डिस्कॉर्ड पे ऐडेड है ना, उन बंदों को मालूम है कि भाई मैं क्लास जाता हूँ, आज छुट्टी है ना, क्लास जाता हूँ, जब रिटर्न आता हूँ क्लास में से ना, तो बस में बैठ के थंबनेल बनाता हूँ भाई मैं। वो चीज़ होती है डेडिकेशन, रोज जाना, रोज आना, रोज स्ट्रीम करना, वो भी तुम दूसरी सिटी जाते हो। कितना 10 घंटे लगते हैं मुझे कंप्लीट करने में, मतलब मेरा रोटेशन डेली का पढ़ाई के चक्कर में, उस 10 घंटे में से 4 घंटे मेरा जो रहता है वो सिर्फ ट्रैवलिंग में जाता है मेरा। उसकी भी तो सोचो भाई लोग, मैं इतना कर रहा हूँ अपने उसके लिए, और भाई लोग बाग बोलते हैं, तुमने करा ही क्या है भाई, मैंने क्या करा वो मुझे मालूम है, मेरे को मत सिखा। मैं तो सीधे यही बोलूँगा कि मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मालूम है मैंने क्या करा है भाई। हाँ पर ये बात है कि जब मैं स्ट्रीम कर रहा रहता हूँ, जो भी चैट करती किसी बंदे से, मैं ऐसे नहीं सब भाई समझ के बात करता हूँ, या फिर मैं सब्सक्राइबर समझ के बात करता हूँ। या तो मैं बोले तो अरे भाई ऐसा ऐसा सीन है, जैसे नॉट मोड, सबको वही बोलता हूँ स्ट्रीम तो कर लूँ पर पता नहीं कैसे करूँ। वो भी एक दिक्कत तो है। बड़ा हो गया भाई छेद, अब पूरा पूरा जा सकता है। शाव बाहर आ गया, लॉलीकॉन तो अपना तो पूरा चला जाए। लाइक कर देना जो जो देख रहा है भाई, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब तो वो जो पोर्टल था, वो वैसा था कि 2 उंगली वाला पोर्टल था, अब तो शाव बाहर आ गया, तो अब तो हो ही जाएगा पूरा। डिपेंड करता है सुजन तुम्हारा सेटअप कैसा है, उसका हाथ वाथ काटा हुआ है शाव का। Let's get him back to the camp. समझ रहा नॉट मोड क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो पोर्टल पे जैसा था।
अब तो शाव बाहर आ गया उसमें से, अब तो अपन जा ही सकते। Now we can avoid getting split up. हैप्पी बर्थडे शाव। अभी अभी पैदा हुआ स्पूटर। थैंक यू। A lot's happened here, but this wasn't just for our own safety. You're injured. We can't just leave you alone. हाँ समझ गया मैं, वही तो। सुजन भाई पीसी में वाईटी खोलो, गो लाइव दबाओ, आरटीएमपी लिंक एंड स्ट्रीम की लो, फोन का स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर लो, डन। हाँ वही तो, इजी है, ऐसी बात नहीं। अगर सुजन तुमको करना है ना तो मेरे को बता देना, मैं समझा It's दूंगा। just a flesh wound. I am fine. I shouldn't let myself be a burden to you. आपका हाल तो मेरे से बुरा है, मेरा ट्रैवलिंग में 3 आवर जाता है। प्रॉब्लम पता है, मेरे ट्रैवलिंग में कम टाइम लग सकता है नॉट मोर। बाकी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो बाइक रहती है ना, जिससे मैं मतलब दूसरी सिटी में मेरा वो इंस्टीट्यूट जाता हूँ देन वापस आता हूँ। सो मुझे यहाँ से बस में बैठना पड़ता है, जो मुझे 2 घंटे लगाती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट लग जाते हैं उसे मान लो, वहाँ जाने में। मतलब वो एक बस स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन पहुँचने में इंदौर में। ठीक है, फिर वहाँ के बस स्टेशन से मैं बाइक लेता हूँ, देन इंस्टीट्यूट जाता हूँ, समझे। देन पढ़ाई वगैरह निपटाने के बाद इंस्टीट्यूट से मैं रिटर्न आता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट से रिटर्न आता हूँ, देन बस स्टैंड पे बाइक रखता हूँ, देन बस में बैठ के वापस मेरे को घर आना होता है। मेरा ये काम है। तुम कॉलेज में हो? नहीं नहीं, कॉलेज कंप्लीटेड है, मतलब एक्स्ट्रा जो रहता है ना अपना, जैसे डाटा एनालिसिस, ये You're सब की not पढ़ाई a के burden. इंस्टीट्यूट में जाता Don't हूँ अभी think मैं। that for one सुजिन, second. We need you, all of us. For our sake, please. Stay here, please. Fine. As you wish. You're injured. Get some rest. Everything else can wait. यस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। यस, वेट until you get better. All right. भाई क्या ही इसकी बॉडी में से वो ऑरा टाइप का निकल रहा है। मेरी स्कूल इस साल खत्म हुई, लोल। यार नोटबोर्ड में सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा हो पार्टनर टाइप का, जो पीछे बैठे, और उसको जब मैं गोवा जाऊँ ना, मतलब जैसे प्लान बन रहा है, तो मैं लेके जाऊँ करके। बट वही डिपेंड है कि भाई किसको लेके जाऊँ। नो वे होम, डॉक्टर लीलान, वेयर इज शी नाउ? समझ रहे हो ना, करना ही क्या है, पीछे ही बैठना है। प्रॉब्लम ये है कि पता है, 1-2 दिन का ट्रिप होता तो समझ में आता, 7 दिन का है, समझ रहे हो ना, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, और 3 दिन का वहाँ पे पूरा स्टे है ऐसा। तो 7 दिन का ट्रिप है ना, तो वो नाटक है। विल भाई को बुलाओ, वो गोवा वाले हैं। हाँ अरे वो तो गोवा में है ना, यहाँ से सोच रहा हूँ मैं। वो गोवा में ना, फिर वो उसकी साइड से स्पॉन्सर हो जाएगा। समझ रहे ना लॉट वर्ड, वहाँ की रातें रंगीन You जो both है। here. Great. I want to talk to you. आपका शुभ नाम भाई? अरे भाई ये बहुत कम लोगों को मालूम है सुजैन, बहुत कम लोगों को मालूम है मेरा शुभ नाम, जैसा आप I बोल रहे हो also ना। felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. अबे नॉटमोड मैंने बोला, पता है अल्ट्रा को, कि स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या मेरा, वो गोवा में जो 3 दिन रहूंगा, तो वही कुछ बोले ही नहीं वो। Now that we've found the conqueror of demons, the next thing we need to do is find a way out. मैं बोला कि यार तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, खातिरदारी नहीं करोगे क्या? I went back to the domain again just now. अरे Although I भाई, couldn't find a new route, it wasn't a completely नाम में क्या fruitless इशू है? trip. अरे अपन डायरेक्ट एक बार में रिवील करेंगे सुजैन, ऐसा सीन है, मतलब फेस कैम के साथ प्रॉपर अपना आईजी वगैरह सब दे देंगे, ऐसा ऐसा सोच रखा है मैंने। My clan has practiced magic for generations and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. Was it an illusion? I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here.
can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. कल स्ट्रीम करोगे? कल नहीं हो पाएगी, कल क्लासेस है ना यार. It can only फ्राइडे have एंड one सैटरडे goal, क्लास है मेरी. to trap us here until we die. What else कल could मैं it be? नाइट में स्ट्रीम करूंगा. और लाइव स्ट्रीम अगर पूछ रहे हो तो वो नहीं होगी. We should prepare for the worst. वो मैं रात में But we देखूंगा. mustn't give up. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Okay. Please जा रही keep हो? everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Otherwise, We got it. क्या? Gilan? 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. Okay. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. Okay. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. Okay. The समझ Liyue गया. army eventually won the war, but there were many who never returned. खराब लगा. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. Okay. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. ठीक है. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. ये भी समझ गया. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. ये यार वन ऑफ द बेस्ट जो है आर्कन क्वेस्ट था उस टाइम के हिसाब से. अभी के लिए तो मैं बोलूँगा कि मैं विश्व के बहुत सारे कैरेक्टर इंक्लूडेड है ना, इसलिए. और से अगर सिंगल कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो किसी एक कैरेक्टर के आसपास घूम रहा है. लाइक ये जो है याक्षा के आसपास घूम रहा है ये वाली स्टोरी. ठीक है, इसलिए मज़ा आ रहा है. और बहुत सारे कैरेक्टर है जो वन ऑफ आवर फेवरेट्स में से एक है. लाइक अपने पास शाओ है, अपने पास सिलान है, अपने पास ईटो है स्टोरी क्वेस्ट के अंदर. इवन यनफाई को किशुनोबु भी एज अ 4 स्टार. सो अपने को ये मज़ा आ रहा है देखने, मतलब ये वाला करने में बड़ा मज़ा आया. बट अगर किसी कैरेक्टर के हिसाब से देखो ना कि मतलब आर्कन क्वेस्ट में किसी कैरेक्टर के ऊपर अगर ध्यान दिया और एकदम बहुत ही शानदार दिखाया, मैं बोलूँगा वॉन्डरर के ऊपर. जो स्कारामूज से वो वॉन्डर बनता है, देन वॉन्डरर की मेमोरी आती है भाई, वो वाला आर्कन क्वेस्ट, वो एक कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड आर्कन क्वेस्ट ऐसा लगता था मुझे. इसलिए वो और ज़्यादा मज़ा आया था वो करने में. चैज मकान व्हाट हैपेंड 500 ईयर अगो. तुम्हारी बहन आई थी यहाँ पे. What he's fighting against. Can we really get out of here in one piece? फिर बात करो. Are you all right? ये नहीं We'll पता talk करो. later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is... All right. Well, Oh, don't worry. I won't write down... no, I'm... ठीक है, इनसे तो टाइम पास खाली बात करनी है ना. शाओ कहाँ बैठा हुआ है? Quit following me. You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. Sometimes I... Too slow. Hey, Ushi,
Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Oh, I sleep like this when I'm in jail? Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? पायमोन का एक अच्छा फोटो चाहिए मेरे को. You think I ट्रेलर को have a हटा नहीं short सकते tongue? क्या अपन पीछे से? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. ये फोटो यूज कर सकता हूँ मैं थंबनेल वगैरह के लिए. थोड़ा सा आगे वॉन्डर. I guess this one is nice. Okay. अब 2 सेकंड देना गाइस, मैं ना पानी पी लेता हूँ, देन वापस कंटिन्यू करते हैं इसको ना. 2 सेकंड दो. Relax. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. वापस आ गए गाइस, अपन कंटिन्यू करते हैं. There's no need to. There's no such thing as. Shaw's eyes are tightly shut and he's not making a sound. No one has the heart to. No one's heart to interrupt him. चलो. जाग गई. Wait, where are we? We are still underground. Paimon, are you feeling better? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? अभी तो हीटर दीवार तोड़ेगा ना. Yeah. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Gucci. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon?
मारा तो है बहुत शौक को लगता है जैसे लपेट लपेट के मारा है Traveler, बोशियस it ने looks like the Conqueror of Demons is awake. शाओ बोल ले कॉन्कर ऑफ डीमंस हाउ डू यू फील I'm fine. Don't worry. वो राउंड मार के आया उसी The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. all thanks to anything Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. ah yeah Oh, sure. It was a senseless battle. I came here looking for someone. But when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshu Inn to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacius. yeah I'm sure I heard this name somewhere before Bosacius? Is that one of the 5 yakshas? Like you? yes I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. बात तो सही है Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other, and know each other's fate to the very end. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor. So it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? okay That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave yaksha was seen putting up a heroic fight, but no one knew the yaksha's name. But there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain. तुम लिखो I लिखो didn't नोट have मोड any कोई other दिक्कत clues नहीं है except for this तुम one. तुम्हारा वो प्रोजेक्ट लिखो और बैठो आराम से But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless yaksha couldn't be him. you found Bosacius Wait. So it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. दिख नहीं रहा तेरे को No way! डोरा द एक्सप्लोरर जैसा हो गया है आपको कहीं दिख रहा है आप अंधे हो The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament.
And this can be done at any time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Okay. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. How is this even possible? याक्षा में सिविल वॉर हुआ है ना, तो शाओ के साथ लड़ने को बचा नहीं या शाओ बच गया? अरे ऐसा सीन नहीं है यार। नॉट लोर के हिसाब से कार्निया में जो 500 साल पहले जो बैटल हुई थी ना, उसमें याक्षा और बहुत सारे रेप्टिस ने फाइट की थी। सो उसमें 3 जो है कि मतलब ऐसा बोले कि चारों मर गए थे, समझा? चारों याक्षा मर गए थे और एक सोल सर्वाइवर याक्षा जो बचा था वो था कॉन्कर ऑफ डीमन, जो कि शाओ है, समझे? वो बच गया था। तो 3 की बॉडी मिली थी, जो 3 मर गए थे, है ना? मर तो चारों ही गए थे, बट 3 की बॉडी मिली थी और एक की बॉडी नहीं मिली थी, जो कि वोशेसस की बॉडी थी। और मतलब जो लोर में ऐसा बताया था कि जो वोशेसस है, मतलब एक नेमलेस याक्षा ने आके चैज़्म के अंदर फाइट की थी लोगों के साथ, मतलब एडिप्टिस और मिलिलिथ्स के साथ मिलके चैज़्म के अंदर फाइट की थी, और नेमलेस याक्षा था, वो सब बोलते थे, ठीक है ना? तो किसी को मालूम था कि वो याग सबको मालूम था वो याक्षा है, बट वो कौन सा याक्षा किसी को मालूम नहीं था, समझे? वो याक्षा कौन सा वाला ये किसी को मालूम नहीं था। सो नेमलेस करते तो शाओ ने भी जस्ट बोला ना कि अगर वो लड़ता भी है तो बिना नाम बताए बस लड़ता है, तो इसलिए शाओ यहाँ पे उसको ढूंढने आता करके, समझे? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. बैकग्राउंड में येलान खड़ी है, ब्लर दिख रही है वो रही। अरे भाई I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? what happened if we You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? हाँ, बात सही है तुम्हारी कि मतलब जो क्लाउड रिटर एंड मैडन पिंक का जो सीन था, मतलब प्लेबल आए तो लीक में बताया गया था ना। हाँ वही वही वही। तो याक्षा के बारे में पता चल सकता है, हाँ हो सकता है याक्षा के बारे में पता चल सकता है, बट मैडम पिंक का जो वो था, मतलब वो वाला फॉर्म था लड़ने वाला, एंड क्लाउड रिटर्नर का भी था, एंड इवन माउंटेन शेपर का भी था, बट माउंटेन शेपर अभी तक प्लेबल है कि नहीं उसकी गारंटीड नहीं है, ठीक है ना? क्लाउड रिटर्नर एंड मैडम पिंक का तो समझ में आता है। और एक और है, क्लाउड रिटेनर है, माउंटेन शेपर है, और एक वो है, वो हिरन, उसका नाम मैं भूल गया, जो हिरन टाइप का था ना उसका नाम मैं भूल गया। तो माउंटेन शेपर और वो तो फिलहाल प्लेबल नहीं, बट मैडम पिंग एंड उसका तो चल रहा है कि हाँ प्लेबल कैरेक्टर्स रहेंगे ये। देखते हैं अभी क्या होता है। हॉटपॉट अभी तो कुछ गारंटी नहीं दे सकते ना अपन। लोर क्या है, बनाने में एक अलग मजा है, बट जो लोर एक्चुअल लोर रहती है ना वो देखने में एक अलग ही टाइप का, समझ रहे हो ना, मजा है। But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean,
It will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. Okay. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. But if this take all of your energy, you are... No. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. Okay. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. We should leave together. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. लो कुछ लोग की स्टोरी क्वेस्ट में बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होती, हैंग आउट कर देते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता. लाइक अभी लिनी को ही देख लो, आंजलिनो वगैरह कुछ नहीं बताया, हैंग आउट कर दी. अरे वो तो ठीक है ना, बट सीन क्या है ये तुम नहीं समझे शायद. नॉट मोड सीन ऐसा है कि जो आर्कॉन क्वेस्ट है ना, उसके अंदर लिनेट ये सबको इतना इन्वॉल्वमेंट दे दिया है ना कि उनकी स्टोरी क्वेस्ट में इतना कुछ बचा नहीं करने को मेरे को लगता है. और इवन हैंगआउट्स में क्या ही कर लेंगे वो, समझ में आ रहा है ना. लाइक वॉन्डर की कभी स्टोरी क्वेस्ट आई नहीं पर्सनल वाली, उसका आर्कॉन क्वेस्ट इतना शानदार था कि वो भी सोचोगे कि क्या ही स्टोरी बनाएंगे अब इसके लिए. स्टोरी में उसके बाद आर्कॉन क्वेस्ट में पूरी स्टोरी दिखा दी ना वॉन्डर की, तो इसलिए तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट उसका ही है भाई. वन ऑफ द बेस्ट किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी कर दिखाया ना, तो उसी का ही दिखाया मैं तो बोलूँगा. To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you this is my last will? अरे बाप रे. You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. सबका ऐसे ही आना चाहिए, बट फिर प्रीमोस नहीं मिलेंगे ना. नॉट मोड ये भी तो देखो. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. Okay. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape, some victory that is. Yelan, don't be so harsh. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. यार ये ले जो तुम शीना वो हो रही है. आ गया घूमते फिरते उसी यहाँ पे भी. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. आ गए भाई साहब. No one staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action. Come on, whatever you
Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Easy now. दिया भाई दिया. Have a taste of this! Yeah! Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Should have seen this coming. अब ये गया भाई. इसका उसका एंड हो गया स्टोरी में. Why do you always have to do things like this? Shinobu, what happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki game, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. उसी के मजे Another भाई. thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant eagle alert! And wasn't he just doing the same thing Shell suggested? So stupid. The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the Okay. boss to me. Don't worry. संभालो. सुलाओ अपनी गोदी में ईटों को. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep बात तो सही है. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. भाई गायब. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me.
I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. ड्रैगन से लड़ेंगे, चाइल्ड से लड़ेंगे, आर्कॉन से लड़ेंगे, लेकिन गड्ढे में गिरेंगे तो नहीं चढ़ेंगे. By the way, चढ़ने का रास्ता इतने you स्टेमिना and नहीं Shao ना. seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. Senpai. We will. Same to you. Alright, Traveler, let's go. Quit following me. मैं डोमेन में आने का रास्ता तो था ना. मैं पहले भी तो आया था. ओके, सो ये वाला डोमेन है. यही टीम नहीं थे, रेड और अटैक परसेंटेज वाली. तो ऐसा भी आएगा ना, एन वगैरह से खेलने दे देंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए. What's this? Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna log that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Incinerate! वैसे टुचुटु यूज करते रहूंगा क्या? लॉस पीरियड दिया है क्या इसको? लॉस पीरियड दिया है. आर्टिफैक्ट नोब्लेस दिए हैं. भाई क्या ही दिया है. डेज भी हेलो, वेलकम टू स्ट्रीम. आई है. नया अकाउंट, सेकंड अकाउंट खेला ही नहीं था अभी आज तक ना. वॉन्डर इसमें देखिए ना, वॉन्डर वाला अकाउंट है मेरा. C1R1 वॉन्डर वाला. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake.
but these are the exact same guys as I met last time. और बताइए डेविड भैया क्या हाल चाल है Is आपके? this space recreating scenes from my memory? Maybe उस this वाले is one of the में ways our ये जो adversary अकाउंट है ना मेरा, intends to devour us. Unbelievable. ये जो अकाउंट है ना, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं था. मैंने सिर्फ मॉन्स्टर के आर्क कॉन्क्वेस्ट करे थे और वो वॉन्डर बिल्ड करना था करके, तो मैं स्पीड रन कर रहा था, तो सुमेरु न हुआ तो सुमेरु का आर्क कॉन्क्वेस्ट कर दिया था. ये प्रीमो सेविंग एंटर प्रो मैक्स आइडिया, वही तो. मेरे हाल बहुत बुरा है. क्यों डील पे क्या हो गया? वो वॉन्डर बिल्ड करा था इसलिए मैंने सुमेरु का आर्क कॉन्क्वेस्ट कर लिया था. समझ रहे हो ना आप? There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, in all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? Huh? A new entrance. Great. Whoa. Is this a title? This is weird. इंडियन को मेरे एग्जाम है तो नॉर्मली पढ़ाई करो, फिर ऐसा थोड़ा ना कि सरप्राइज एग्जाम तो होगी नहीं. डेविड भैया पहले से ही बता दिया होगा आपको. The Fatui? Whose memory is this? ये प्रीशियस ट्रेल्स का, हाँ वही है वही है. Watch out! Just as I thought. Yeah. Caleb, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Motion to compel. Busted. एक्वा C3 दिए. ओके एंड क्राउन हो गया ना. Gotcha. Take you down. Incinerate! Quietly now. Here comes the cash. चलने दो. Amateurs. And still they dare to come after me. थोड़ा सा लैग हुआ तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे. वो तो है. मेरा एग्ज़ाम तो कल है. ओपन बुक का नोट्स लिख रहा हूँ अभी. ऑल द बेस्ट. वेल भाई की एलान चलाने के बाद ट्रायल वाली वेलन किस काम के? एज भाई वापस आ गया. जय श्री राम. वेलकम वेलकम. लाइक नहीं किया था क्या लास्ट टाइम एज भाई? आप आज लाइक नहीं पड़े हैं. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. जय जगन्नाथ. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word. Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the Fantastic Compass in the distance. It has a close connection to the entire space. देखा लाइक कैसे बढ़े. 10 लाइक हो गए की बात. मैं 8 में था. लाइक नहीं किया था तो मैं. समझ रहे हो? ठीक है भाई, समझ गया मैं भी. Too slow. फॉरवर्ड नहीं हो सकता ना. बैकवर्ड में कितना जाएगा? नीचे वाले पे चलते फिर. बैकवर्ड में नहीं जा रहा. ठीक है, फॉरवर्ड वाले में चल के देखते हैं एक बार क्या है.
भाई ये चीटिंग है, मेरी वॉन्डर की एबिलिटी चलेगी। ठीक है भाई, क्या सीन बन रहा है अभी? यहाँ पे नीडल घूम सकती ना, यहाँ पे घूम सकती। इधर बैकवर्ड घूम जाएगी नीडल एक बार, बस इसके बाद नहीं घूमी शायद। इस पे फॉरवर्ड घुमाते के देख करते, एंड देन कियोटिक स्पेस में एंट्री मारते हैं, एंड देन सेकंड स्पेस में एंट्री। यहाँ आ गए अपन। अब यहाँ से नीडल को फॉरवर्ड घुमाते हैं। ठीक है, अब चलते अंदर। स्किल, फ्लाई एंड सेकंड क्रिटिकल में एंट्री। अभी क्या है ये? अभी कौन सा नीडल है ये? फॉरवर्ड नहीं घूम रहा है, बैकवर्ड। अरे भाई ये दिमाग खराब होना चालू हो गया। नॉट मोड कुछ है क्या? तो देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ रहता है यार, करना रहता है। फॉरवर्ड वाले में चलते फिर। मतलब फुल 12 कर दोगे क्या रीसेट के बाद? क्यों अभी 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 वाला नहीं हो गया? अभी वाला भी नहीं हो गया तुमसे? अभी याद आ रहा हो क्या करना है। रीसेट कब है? रीसेट एक दो दिन में ही डेज भैया। ये बड़ा दिमाग खराब का कार्यक्रम है यार ढूंढने में। बस ऐसे ही चाइल्ड के मजे लेने के लिए मेरा अभी कर दो बोल रहा। हाँ ठीक है ना, चाइल्ड से मजा तो आता है टाइम पास करने में। 1 डे से ज्यादा और में रीसेट है, सही है फिर तो। करते करते नॉट मोट, कोई टेंशन नहीं है यार। ये क्या हो रहा है अब? बैकवर्ड नहीं घूम रहा, फॉरवर्ड कर देते हैं। पता नहीं कौन है, छोड़ो यार। इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, मैं कॉल कर गया था ना, पूछ लेता हूँ कौन है। पता नहीं कौन है। हेलो। हाँ ठीक, बाय। मेरे भाई के लिए फ़ोन था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा करके, तो उसका फ्रेंड मेरे को फ़ोन पे पूछ रहा है कि यार वो कहाँ पर है भैया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा करके। ठीक है भाई, कर लो। इस क्वेस्ट में 20 मिनट तक घूम रहा था यहाँ। क्या बात कर रहे हो डिविस भैया, इतना टाइम लग गया भैया आपको भी? मेरा खुद का दिमाग खराब हो रहा है भाई, नीडल घूमता किस साइड है? अब वो फ़ोन नहीं उठा तो मेरे को क्यों फ़ोन करते लोगों में, मुझे समझ नहीं आता। ये ने पुल भी कर दिया भाई, ये ऊपर भी चढ़ा दिया मैंने। अब क्या करना है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अब नहीं हो रहा। ठीक है
फिर वेस्ट चला गया वांडर का स्कीमर में। करना क्या है इसमें? मैं खुद भूल गया भाई। अगर मैं डायरेक्ट इसमें एंटर कर जाऊं तो फोड़ों के पीछे भी कुछ लेने का होता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉटी वो गेट खुला रहता, मुझे ये याद है अच्छे से। ये नीडल जो है ना जमीन पे घिस रही है, दिक्कत आ रही है यहाँ पे। उसको बैकवर्ड्स करके चलते रहो। एक और बैकवर्ड हो रहा है क्या? नहीं होगा ना, नीडल घिस रही जमीन पे, नहीं होगा। इसके पीछे के ऐसे पीछे जा ही नहीं सकते ना। Upon the gale. गेट नहीं, जहां से एग्जिट मारे हो उसके पीछे से। वही तो समझ में नहीं आ रहा किधर की बात कर रहा है तो नॉट मोड। वही तो समझ नहीं आ रहा था। पीछे देखो, पीछे देखा मैंने। यहाँ से जाऊँ क्या? अच्छा, यहाँ कहीं पे ये डब्बे क्यों हैं? We'll see about that. यहाँ तो कुछ नहीं, नॉट मोड। कुछ भी नहीं है ऐसा तो। कुछ भी नॉट है यहाँ पे तो। लैग क्यों हो रहा है? अरे वो नेट का इशू है, नेट की दिक्कत आ रही है डेविस भी, और कुछ नहीं है। इधर कुछ मिलेगा, टाइम बदल के देखो। हाँ वही करता हूँ अपना, बैकवर्ड करता हूँ नीडल को फॉरवर्ड पे तो। The wind rises. नहीं, कुछ भी नहीं नॉटी। नॉटी मोड हुआ, कुछ भी नहीं वहाँ पे। दोनों नीडल को फॉरवर्ड करके देखता हूँ मैं। अनुपम, अनुपम, अनुपम। Search for it. Too slow. ये याद है कि गेट ओपन करने से कुछ होता है यार, ये अच्छी याद मुझे, फिर गेट करने से कुछ होता है। अनुपम, वहाँ फोन है इसलिए नहीं ऑन स्ट्रीम।
कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सानू यो यो, अरे वेलकम टू द भाई स्ट्रीम भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी देखो और परेशान हो थोड़ा। हम बहुत देर से परेशान हो रहे यार। फॉरवर्ड नहीं जा रहा। हाँ, बैकवर्ड मारते इसको भी और इसके पहले वाले को भी मारते, दोनों को बैकवर्ड मारता हूँ उनको भी। एक पेपर मिलेगा कहीं पे तो तब जाके आएगा, आगे जाएंगे। दो पेपर मिल चुके मेरे को पता है, एक्चुअली दो पेपर मेरे को मिल चुके ऑलरेडी। नॉट मोर, दो पेपर तो उठा चुका हूँ मैं तो। कभी क्या खुद भूल गया यहाँ करना क्या होता है। ये नॉट मोर आओ, सभी परेशान हो भाई, सब आओ ना। कुछ भी नहीं, दो पेपर मैं उठा चुका ऑलरेडी, नॉट मोर पता है, दो पेपर मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ। यहाँ कहीं मिलता है तो याद है, एक तो यहीं से उठाया मैंने। बताओ साई भाई, यहाँ ये वाला कैसे कंप्लीट करना है बताओ। मैं प्राइमोडियल, हाँ वो प्राइमोडियल पता नहीं क्यों स्ट्रीम नहीं कर रहा। मैं भी जाता था भाई की स्ट्रीम पे, तो अभी पता नहीं क्यों स्ट्रीम नहीं कर रहा। भाई कितना कितना ही कंफ्यूजन है, देख रहे हो कितना ही कंफ्यूजन है। नेक्स्ट लेवल है। फॉरवर्ड में हो रहा है, बैकवर्ड में। मैं फॉरवर्ड में ही जाता हूँ और इसके बाद वाली फॉरवर्ड ही करता हूँ। अब इस वाले को भी फॉरवर्ड कर बैकवर्ड पे लाता हूँ, सेम वाले पे। ठीक है, अब चलते हैं उस वाले पे। नहीं, यो यो आरपी में गया है आई गेस। स्ट्रीम नहीं कर रहा ना वो, अपने वही ना चश्मा पहनते भाई, प्राइमोडियल रेड ऐसा कुछ नाम है उनका। भाई करना क्या है यहाँ पे। क्या करना है भाई, जीटीआरपी। अरे ठीक है ना, नॉट मोड वो तो, बट स्ट्रीम कहाँ है। यहाँ पे देखिए ना, दो ये न्यू पेपर, नो फाउंड, यू फाउंड अ नोट दिस मिस्टीरियस स्पेस लिटर वेटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द। बैकवर्ड नहीं हो रहा। चलो भाई फॉरवर्ड चलो, वो क्या करेंगे। और फॉरवर्ड नहीं आएगा ना ये, नीडल फंसी हुई है जमीन में इसके हिसाब से। सानू भाई बताओ यहाँ पे क्या करना है। सानू भाई जब तक आप बताओगे नहीं तो सानू को एक पल चैन नहीं आएगा, सानू एक पल चैन ना आवे, हम फंसे हुए हैं, बताओ। यार यहाँ नीडल फंसी भी नहीं है, यहाँ तो ढूंढना चाहिए इसको तो। नीडल फंसी भी नहीं है, बोला नीडल फंसी ग्राउंड में, कहाँ फंसी भाई ग्राउंड में। हमको कहा नहीं दिख रही है फंसी हुई तो। किसी टाइम में और गेम में कुछ होगा। अरे तो कौन से टाइम में होगा भाई, दो ही तो टाइम है बस। दोनों का दोनों ट्राई कर लिया, दोनों फर्स्ट ट्राई कर लिया, दोनों सेकंड ट्राई कर लिए। अभी एक चेस्ट मिल रहा है बस यहाँ पे, वो चेस्ट ले लिया मैंने। देखो क्या गेम है, कुछ भी नहीं है। दिमाग खराब कर दिया भाई, क्वेस्ट ने दिमाग खराब कर दिया। और किसी को जवाब भी नहीं पता भाई, किससे क्या करना है।
गाइड से इसको ना मेरे को लगता है फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब का गाइड देख लो। अरे वही तो नहीं मजा आएगा फिर अगर वो देख लिया तो। ये सेकंड क्योटिक पे है अभी। Squalor Fury. और ये वाला सेकंड पे ठीक है, वो वाला फर्स्ट पे है, ये वाला सेकंड पे। यहाँ पे डब्बे रहते हैं वो फोड़ दिए हैं मैंने ऑलरेडी। अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। The wind rises. Too late for regrets. ये टूट भी नहीं रही है, फोड़ भी नहीं रही है। अब क्या करूँ, इसको फॉरवर्ड नहीं जा रहा ना। इसकी इंडल को बैक पे रखता हूँ और उसके आगे वाले को फॉरवर्ड पे रखता हूँ। ये कर सकता है एक बार ट्राई, और क्या कर सकता हूँ। We go. भाई बड़ा ही कंफ्यूजन है ये तो। Behold. Quit following me. यहाँ पे कुछ नहीं है। Too slow. और इस तरह को सेकंड पे सेट करके देखता हूँ। बैकवर्ड नहीं घूम रही, फॉरवर्ड घूमेगी घूमेगी। और फॉरवर्ड नहीं जाएगी इससे ना, ठीक है। The wind rises. कितना कंफ्यूजन है गाइस। कोई देख के आ सके तो बता दो मेरे को यार। मोबाइल पे खेल रहा हूँ ना अभी, तो मैं यूट्यूब नहीं कर पाऊंगा। बाजू में दिक्कत वही है सबसे बड़ी तो। एक एक मिसिंग है यहाँ का, दिख रहा है मुझे। क्या अनुपम, तूने ये वाला क्वेस्ट कर लिया क्या? तेरा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा। 20 मिनट से घूम रहा, रास्ते नहीं मिल रहा। इस क्वेस्ट का नाम क्या है? थंबनेल में लिखा था कुछ। नहीं नहीं, आर्कन क्वेस्ट 2.7 वर्जन का आएगा तेरे सुन कुछ टाइम में। डेविस भी नाम क्या बताया था आपने इसका? वो प्रीवियस क्या होता है, प्रीशियस ट्रायल्स ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे इतना याद है साहिब भाई। प्रीशियस ट्रायल्स का क्या नाम है? इंदौर में है क्या अपन? मैं बोल कि मैं तो नहीं हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। और ये वो होगा, उससे बात कर लो। वो गया, मैं नहीं गया। Quit following me. यो ओम भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। ओम भाई तुम भी बहुत सही टाइम पे आए हो। आओ कंफ्यूज हो हमारे साथ। क्या करना सोचो उस यहाँ पे। कुछ तो करना है वगैरह, समझ रहे हो ना, कुछ तो करना है। और वही समझ नहीं आ रहा क्या करना है, भूल गया सब। रात को लाइव करोगे क्या? हाँ रात में करेंगे। एंड ये क्या है, ये वाला नाम है, ये प्रियल ट्रेल्स करके एंड ऑफ द लाइन। या देख के आता हो तो फटाफट कि कैसे कंप्लीट करना है इसको। थर्ड सिंबल नहीं आ रहा है इसका।
fury. Too slow. वेट देख के आता हूँ फटाक से। हाँ वो सायो सायो भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। The wind rises. भाई कैसे किया था कंप्लीट में नहीं है। मुझे मतलब नॉट मड़ी घड़ी वाला बहुत खतरनाक है भाई, बहुत बेकार है घड़ी वाला। Behold! Quit following me. Squall and fury. मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कहीं फंस गया हूँ। ओ भाई, जॉर्ड वंडर है जॉर्ड। वेट करते क्या, अच्छा अच्छा अभी कोई। मैंने देखा वो केव का गेट खोलने के बाद ही लास्ट वाला टाइम खुल गया। अरे बट मेरा गेट तो खुला हुआ है, ये रहा ना, गेट तो मेरा खुला हुआ है। Following me. गेट तो मेरा खुला हुआ है, मैं वही तो बोलूं, गेट तो मेरा खुला हुआ है ना। गेट मेरा भी खुला हुआ है सारा भाई, ये तो देखो, गेट तो अपना ही खुला हुआ है। Quit following me. गेट अपना ही खुला हुआ है, बट अपना क्वेस्ट वो नहीं दिखा रहा ना यार। अगर गेट वाले से होता तो इतनी में तो मैं कर चुका होता, ये तो सोचो आप। और यहाँ पे भी गेट खुला हुआ है, ये देखो, ये लो गेट खुला हुआ है नीचे यहाँ पे भी। उस टाइम वाला चीज को थोड़ा मार के देखो तो। Let's light it up! अल्लाह, Upon the gale. एक मिनट, मैंने कुछ पत्ता ऐसा तोड़ा अभी, मैंने कुछ तो तोड़ा। आई डोंट नो व्हाट, बट मैंने कुछ तो तोड़ा है। अभी हो गया शायद, रुको, अभी हो गया शायद। Quit following me. उसके पास में कुछ था, एलिमेंटल साइड में देखा तो चमक रहा था वो आइटम। ये कर चुका हूँ मैं। Behold! और कुछ नहीं है। Too slow. कुछ तो तोड़ा मैंने, बट ये अभी वर्क नहीं कर रहा। बोला कि तोड़ा शायद उससे हो गया। ओके ओके, अब फॉरवर्ड करो। यप यप यप, हो गया।
अब तक नहीं हुआ है, अभी हो गया ना रेस भी, अभी मिल गया रास्ता अपने को। मैंने कुछ तोड़ा हुआ पत्ते सब आगे में था उसके ना, उसके बाद हो रहा है। अब हो रहा है ना डेविड भी आगे आ गया ना अपन। Another new space. यस, और यहाँ पे तो बोशेस वाली फाइट हो रही होगी ना। पहले जो 2 क्लॉक है वो फॉरवर्ड करो, बाकी ही रोटेट करो एंड दरवाजा खुलेगा। अरे नहीं, सब ऑलरेडी कंप्लीटेड है ओम भाई, वो सब ऑलरेडी कर चुका था मैं। If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. बात तो सही है। Osatius, I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. शाओ No enemies. Hold on. मार्केट काम आया, मारपीट काम आया, वही तो। Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back. Stay back, this is my fight. This is my fight. याद था मुझे। Do not come near me. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosatius' signature tactic. Die here with me! How did a valiant warrior like you die here? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Look! Osatius is showing signs of fatigue. Bosatius, martial Retris. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. इतना टाइम नहीं बस्ट मारने में, बस डैमेज भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है। Phantom, be gone! क्या ठोकते रहते बाजू वाले यार, रुको जरा देख क्या है मैं ना। तो टक 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 कर जा रहे भाई, खील ठोकड़े की मजाक कर रहे, जरा बोल के आया मैं, भैया थोड़ा आराम से रुको जरा।
वापस आ गया मैं, ठीक है। एंड ट्रैवलर शायद 3 प्लस क्यों मार रहा है यार, यहाँ देखना था यार। क्या हो गया, मम्मी मैसेज डिलीट कर दिया? Joe, are you okay? You haven't recovered from your injuries yet. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Marshal Vitris? Yes. Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. He was saying something about holding the line. भाई पिंग वापस अपनी माँ बहन करवा रही है भाई। क्या दिक्कत है भाई, गाली बकने का मन करता है। He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm
suddenly feeling more tired than I was. This space is really starting to affect us. Okay. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Quit following me. Squall of Fury. ओके लास्ट वाले पे जाना है मेरे, ये जो कोने पे है इस पे जाना है शायद ना. ये कोई नई जगह लग रही है. The wind rises. Yep. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. लेटर नंबर 4 मिल गया, डायरेक्ट 3 किधर है? It looks like these were letters. So, who's this boy on? You mean... I believe so. And the milliliter... I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? नहीं वो नेट फिक्स किया ना सालो भाई, नेट फिक्स किया ना इसलिए दिक्कत आ रही है. Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Squall of Fury. इसकी मैं 10-10 मिनट की 3 वीडियो बनाने वाला हूँ. There's nothing here at all. What a creepy space. It has the feel of the abyss, but where are the opponents? I think this is my memory Your memory? Of what? of abyss. There's the power of the abyss. The abyss? Places created purely based on your memory? I'm afraid so. Yeah. It's getting darker. स्ट्रीम ना भी अटक रहा, दिक्कत तो दे रहा है, अभी देख पा रहा हूँ मैं. होप कि अभी दिक्कत ना हो. Lumine, wait! लुमीन वेट. नेट की दिक्कत तो बहुत आ रही है भाई, अभी नहीं आ रही जितना मुझे लग रहा है. Huh? What's that shiny round thing on the ground? The fantastic compass.
In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. चलो इट्टो के पास वापस और क्या. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. सब अलग अलग क्यों खड़े भाई? अभी मैंने फाउंटेन के 3 एरिया को 100% हो गया. अरे भाई काश इतना मेरे भी पास भी कर पाता भी सान हो गई, बट दिक्कत क्या बहुत चल रही जीवन में. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Not one. ठीक है. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, 2 of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back. My Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? Paimon doesn't wanna die! Cutscene. Paimon's had enough of this place. Let me out! What was that? Huh? I got it! I just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time, but I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work.
It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look! Something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Osatius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Okay. Quit following me. The wind rises. Shinobu, Ito, we're back! How's it doing? He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human. Human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it... बस 3 हेड उसने चाहिए फाउंटेन का वो ट्री लेवल 20 हो जाएगा करो करो सानू भी आराम से करो Awesome. So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy. Paimon's so nervous. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. जिनी का स्टोरी को से मिल जाएगा सचिन हाँ मिल तो सकता है एंड करके तो मिल ही जाएगा शायद I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes,
And everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? I remember a giant snake just outside this place. Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, the fantastic compass will likely disappear. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by right should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Coming. Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval.
That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. It ओपी was सीन terrifying. मेरे को गूज़बम्स आ गए अरे भाई बहुत खतरनाक सीन है ये वाला भी I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not! You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so Bullchucker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? I doubt it. Let's go check on him. Slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. What the heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Ah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that! Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! We have at 62. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square.
Hmm? Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope... We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Galen! All You right. knew I was waiting for you? Yeah, it was obvious. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. एंड करके खत्म करूंगा स्ट्रीम आज. You want to use my hat as an umbrella? Yeah. The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side.
He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capesus. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments. It took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. So it was Zhongli's power back there. In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Supporting each other is how people survive. Yes. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius' memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. खत्म. मेरा फोन अटक गया है भाई. मेरा फोन हैंग हो गया है. Minogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Life of Winners, bago to yaw. Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. ये कब से आके बैठे सोचा थोड़ा साइलेंट रहे. वाह. Clear as day. What do you think? लाइक भी कर दो फिर. 12 ही लाइक है. कब से बैठे हो? 12 लाइक तो 1 घंटे पहले से. Do you want to go home?
I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? Where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Atlantis, is that you? क्या डिलीट कर दिया? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. और लाइक अभी कर रहे हो? My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake. At least tell me your name. Brother! Brother Bosacious. Hey, Bosacious. Bosacious. I am Bosacious, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. अभी लाइक किए तुम्हें? तेरा लाइक अभी दिख रहा है मेरे को. So much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. तो ऑफिस में था, अभी फ्री हो. अच्छा Destiny is the one ठीक. disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are सही destined है to फिर तो. misery. And yet, we have no fear. How? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Idarius all perished, and only Bosacious' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacious. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacious was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacious, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is गेम लैग नहीं हो रही है. लाइफ ऑफ विनर्स मेरी स्ट्रीम लैग हो रही है. OBS के ऊपर बहुत एफर्ट पड़ रहा है. गर्म हो गया लैपटॉप भी. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. कंप्लीट हो गया भाई. यहाँ पे विश आई होगी ना एक.
किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? किसी ने कुछ नहीं देखा, मत देखो, दर्द होगा। You think I've got a sharp tongue? आंखें बंद कर लो, किसी ने कुछ नहीं देखा, बहुत है। 39 बहुत है। किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? मेरा भी सेम ऐसा ही है। क्वेस्ट वाला विंडो फुल भरा हुआ। सेकंड आईडी है ना यार मगो तो भाई, ये सेकंड आईडी है मेरा। वो ये चेक करना है कि हो गया ना, 3 घंटे प्लस का स्ट्रीम तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. मेरी मेन आईडी कहाँ, वही समझ गया मैं वो तो। तुम्हारी मेन आईडी, मेरी सेकेंड आईडी। शाह नीचे खड़ा ना, मे भी वही खड़ा है नीचे। क्या अभी पुल का करने वाले हो? नहीं नहीं, वेंटी पुल करूंगा मैं, इस आईडी में वेंटी चाहिए मुझे। वेंटी चाहिए अपने को, वेंटी। फिर डोमेन के अंदर बूम बूम करूंगा वेंटी लेके मैं। यो अभी तक लाइव कितने बजे तक लाइव करने वाले हो? बस स्टोरी एंड हो गई, तुम थोड़ा लेट हो गए। और देखना कि बच्चा क्या है करने लायक। अच्छा एक बार इसको मार देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मारने के लिए मैं टीम चेंज करूंगा। Chivalry will never die. मैं आज सेट कर ही देता हूँ यार, किसी सेटिंग भी खेलूंगा मैं बस। Quit following me. There's no end to this. No, my sword! Another test subject. We'll see. गेम बहुत अटक रहा है, स्ट्रीम नहीं अटक रही, मेरा गेम अटक रहा है, पहले बोल दो ठीक है ना। मेरा डिवाइस बहुत गर्म हो गया ना, इसलिए दो फिर से स्ट्रीम कर रहा हूँ, समझना ना। गेम लैग नहीं हो, गेम लैग हो रहा है मेरा ना, स्ट्रीम लैग नहीं हो रही है, पहले बोल दूँ मैं। तो जिसको लग रहा है कि स्ट्रीम अटक अटक के चल रही है, तो नहीं, स्ट्रीम प्रॉपर है अपनी एकदम। गेम अटक अटक के चल रहा है, उसके भी रीज़न सिर्फ एक ही है। 3 घंटे प्लस की स्ट्रीम हो गई, मेरा डिवाइस काफ़ी गर्म हो गया है। थोड़ी देर में एंड करने वाला हूँ। सीड करने वाला है कल स्ट्रीम करने, तो भाई मैं भी करता, अगर मैं अवेलेबल होता तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना यार, फ्रेंड आया था इसलिए जाना पड़ा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुमने मिस कर दिया वो मेन चीज़। सेटिंग तो सेट करने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है ना, फिर जाके अप्लाई होता है। नहीं नहीं, कुछ कुछ सेटिंग ऐसी जो विदाउट रीस्टार्ट की भी हो जाती है, जो मैंने करी वो विदाउट रीस्टार्ट की हो जाती है। Let me leave you alone. Have fun with this gift. I'm going! Bow your head. उफ, इतना बेकार। इतने फॉर्जन लेवल हो जाना चाहिए ना, 80 अनलॉक हो ही जाएगा। थोड़ा और बचेगा, 80/90 करना फॉर्जन, 81/90 रखेंगे फॉर्जन को, ठीक है।
हाँ, कुछ सेटिंग्स ऐसी ओम भाई जो विदाउट उसके भी होती है। क्या गंदा डैमेज दिया, फटाक से खत्म कर दिया। वो वॉन्डर बहुत अच्छा डैमेज देता है मेरा, मेरे को दूसरी 2 टीम बिल्ड कर दी ना, दिक्कत वही है। वॉन्डर बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा है मेरा। वो C6 फोर्स आ रहे हैं, ऊपर C1 R1 वॉन्डर है। C2 होता तो और ज़्यादा डैमेज करता, तुमको शायद पता नहीं है अभी ओम भाई। यहाँ पे कोई क्वेस्ट वगैरह चालू हो जाएगी लग रहा है मेरे को। बेटर रहेगा मॉन्स्टर में टेलीपोर्ट मार लेता हूँ। शाम हो गई। लाइव अवेयरनेस मुझे रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया तुमने, कर दो ना। क्या बोल रहे हो साहब भाई, एक सेकंड को। वो राइडन नहिदा बेनेट शांगलिंग टीम ट्राई किया? किस में किधर करना है सानो भाई बताओ। वो आईडी में राइडन ही नहीं है मेरी, ये वाली आईडी में राइडन है। आप बताओ क्या टीम है, कैसे यूज़ करना है तो मैं करूँ। आप जो बोल रहे हो उसमें तो एग्रेवेट नहीं होगा, उसमें तो कंप्लीट ओवरलोड ही होगा। मैं सेम टीम यूज़ करता हूँ, बट शांगलिंग जी के जो सारा मेरी C6 है ना, तो वो यूज़ करता हूँ मैं। और भाई लोग अगर किसी लाइक नहीं है तो लाइक कर दो। 2 लाइक और चाहिए, 15 हो जाएंगे। कहाँ ट्राई करना है बताओ। ओम अभी ऑफिस से फ्री हुआ हूँ, 1-2 घंटे बाद सेंड करता हूँ। अभी आपके स्ट्रीम में भी देखा था, उस टीम से अविस कर रहे थे। वाली टीम से कल मैंने सारा वाली टीम से किया था भाई। और ये नेटवर्क फिर अपनी अम्मा करवा रहा है, दिक्कत दे रहा है, रुको थोड़ा सा। मैंने भी वो ट्रिम ट्राई करा, बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे वो ऐसा है सानू भाई कि मतलब वो समय समय के हिसाब से, वो स्पाइरल ऐसा था तो उस स्पाइरल के हिसाब से यूज़ किया था मैंने, समझ रहे हो आप। वो स्पाइरल अभी जैसा था कि उसके हिसाब से यूज़ करा था मैंने। ऐसा कुछ खास नहीं उस टीम में, बट वो स्पाइरल के हिसाब से वो टीम था ना, बस ये बात थी और कुछ नहीं। नेट बहुत गंदा चल रहा है मेरा यार। जो आपके कैरेक्टर्स रहते हैं उसमें से अच्छी टीम कैसे चूज करते हैं बताओ। अरे डिपेंड करता है, पहले कैरेक्टर तुम डिसाइड करो तुमको किससे खेलना है, समझे, उससे उसके आसपास टीम बनती है।